एवं एक अन्य अविता का रानू परुहा को 33.8 अंक प्रदान किए गए। अभ्यर्थी के सर्वाधिक अंक होने के कारण अंतिम रूप से चयन आमंत्रित की गई। जिला समिति के समक्ष रानू परुहा आपत्ति प्रस्तुत की कि रामदास बर्मन द्वारा दूसरी शादी कर ली गई। इसका कोई रानू परुहा को दूसरी पत्नी नीतू बर्मन का परिवार सूची में नाम नहीं है। नीतू बर्मन द्वारा बीपीएल एवं 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत की है, वो फर्जी है। आपत्तिकर्ता को बीए प्रथम द्वितीय वर्ष की अंक सूची के अंक नहीं दिए गए। जिला दावा आपत्ति निराकरण समिति द्वारा, इसमें रेसिडेंस का तो उठाया ही नहीं गया है, तो कोई इशू उठाएगा। एक सेकंड, इसको पढ़ रहे हैं अपन, इसमें कहीं है, अगर गलत है तो बताइएगा। तो सेकंड लाइन आपने देखी कि जिला दावा आपत्ति निराकरण समिति के समक्ष रानू परोहा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि रामदास वर्मा द्वारा दूसरी शादी, ये नीतू को प्राइवेट रेस्पोंडेंट जो है सर, ये रामदास वर्मा की दूसरी व्याहता पत्नी ने ये एक एग्रीमेंट पेश किया है डिपार्टमेंट के सामने कि इस काम के एग्रीमेंट के द्वारा हमारी शादी की गई है। अच्छा, चलिए उसको भी देखते हैं सर। ठीक है। ये हाँ। जिला दावा आपत्ति निराकरण समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण इस प्रकार किया गया। नीतू का विवाह का शपथ पत्र संलग्न है। अरे, शादी कुछ समय पहले ही होने के कारण परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं, बीपीएल के अंक नहीं दिए गए, 12वीं की अंक सूची होने का कोई प्रमाण नहीं। चलिए अब उसको एफिडेविट देखते हैं। एफिडेविट इज ऑन पेज। मैरिज एफिडेविट क्या है सर? मैरिज एफिडेविट है सर, हमने एनेक्चर सर, हमने अमेंडमेंट के द्वारा एक एनेक्चर पेश किया था। नहीं, ये ठीक है, पेज 37 पे लगा हुआ है। ये आइएगा। हाँ, आप गुप्ता जी बताइएगा, पेज 37 देखिएगा डब्ल्यूपी का है नहीं सर, आइए नहीं, पेज 37 मेरे इसमें तो एडिशन के साथ ही लगा हुआ है। पेज 37 आइए। क्या है पिटीशन तो 34 पेज की पिटीशन सर, अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट करके 37 लगाया गया। चलिए भाई, आपकी फाइल में देखिए, आगे पीछे होगा किसी आईए के साथ में। R5 ने रिप्लाई में R2 के तहत भी लगाया है। R2 भी लगा हुआ है। R5 के 2 में R5 2, हाँ, ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 के वर्किंग में लगाया। बताइएगा प्लीज। वैवाहिक अनुबंध सहमति। हाँ, सिर्फ इतना सा इशू है कि ये वैवाहिक अनुबंध पत्र, सहमति पत्र जो है, ये क्या मैरिज का प्रमाण पत्र है क्या? ये आप लोग किसी को फेवर करने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं? नहीं सर, पढ़िएगा इसको, पढ़िएगा। हमने तो इसको देख लिया। My lord, permit my lord may call the record entire selection process. नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है, इसको छोटे से अभी डिसाइड कर देंगे। इसमें पर ये जो कमिश्नर का आदेश, नहीं, कमिश्नर को भी पढ़ेंगे। पहले तो सिर्फ पहले हम इतना आपसे पूछ रहे हैं, उतना तो बताइए, ये आपकी सरकार किस प्रावधान में इसको वैवाहिक अनुबंध पत्र को विवाह का प्रमाण मान के अनुमति देती है? बस इतना बता दीजिए, तो हम सभी ये नोटराइज, ये शादियां सब हो जाएंगी। वैलिड नहीं है सर, ये वैलिड नहीं है ना? नहीं। बस इसको कहाँ कंसीडर किया कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने? इतना दिखा दीजिए। ये लिख रहे हैं कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों पूर्व से विवाहित थे। प्रथम पक्ष का पूर्व में कैमोर निवासी अशोक कुमार बर्मन, पिता श्री संतोष कुमार बर्मन के साथ विवाह विधिवत संपन्न हुआ था, परंतु प्रथम पक्ष का अशोक कुमार बर्मन के साथ विवाह होने के पश्चात लगभग 7 वर्ष तक साथ साथ रहे, परंतु अशोक कुमार बर्मन द्वारा अन्य महिला से ताल्लुकात रखने व अवैध रूप से रख लेने से दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा होने लगी। काफी समझाने के पश्चात भी अशोक बर्मन अपनी आदतों में सुधार नहीं आया, बल्कि शराब पीकर प्रथम पक्ष को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। इससे कि तंग आकर प्रथम पक्ष द्वारा अपने पूर्व पति अशोक कुमार बर्मन को 5 साल से पृथक अपने माँ बाप के पास रह रही है। परिस्थिति में प्रथम पक्ष एवं अशोक कुमार बर्मन ने आपस में सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपरा के अनुसार छोड़ छुट्टी करा लिया। कौन सी कम्युनिटी है ये, इसमें छोड़ छुट्टी? बर्मन है सर, ये शेड्यूल कास्ट में बर्मन कास्ट में आते जी। ठीक है। अच्छा, ये वो बर्मन नहीं है बंगाली जो होते हैं? नहीं,
जी। तो इनका छोड़ छुट्टी हो गया था, दूसरी पत्नी ने रख लिया था और वो पहली वाली कहीं और ऐसा है नहीं क्या? जी। ये लॉ में एक्सेप्टेड है ये लॉ तो नहीं छुट्टी? पता, लेकिन सामाजिक अरे आप वकील हैं तिवारी साहब जी, ये तो बताएंगे ना आपकी एक किस लॉ में परमिसिबल है छोड़ छुट्टी? समाज में मान्यता है। समाज में मान्यता है, लॉ में एक्सेप्टेबल है ये मान्यता? सर 2005 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब में छोड़ चिट्ठी लागू है, शेड्यूल कास्ट को। कौन सा जजमेंट है 2005 का बताओ वकील साहब? सर स्पेसिफिकली याद नहीं, पर मेरे को सर 2005 का एक जजमेंट है, मैं अभी नेट पे सर्च करूंगा, मिल जाएगा सर। दीजिए नेट पे सर्च करके दीजिए, मदद करिए, तुम भी देखो भाई। बताइए फिर, बस इतना सा बिंदु है? आपने वास्तव में सही बोला था, छोटा सा बिंदु है। मेन इशू था कि राज्य ओपन बोर्ड की मार्कशीट छोड़ दीजिए उसको, राज्य ओपन बोर्ड की हमें मालूम है वो एक्सेप्टेबल है। जी, I'll hold it in your favor। को यदि काउंट किया जाए तो हमारे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और ठीक है, लेकिन ये पत्नी का कहाँ से आ जाएगा? इनके अपॉइंटमेंट से पहले हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। अरे हुआ होगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट कमिश्नर ने डिस्कस नहीं किया, तो काइंडली मैं भी डायरेक्ट टू काय को अभी हम डिस्कस करके डिसाइड करते हैं, लिखिएगा। This petition is filed being aggrieved of the order dated 11/12/2012 passed by additional collector Khatni in appeal number 32/B-121/2011-12. So also the order dated 18/2/2015 passed by Court of Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur in appeal number 389/B-121/12-13 on the ground that petitioner has been denied appointment on the post of Anganwadi Sahika Karyakarta for village Pipariya Paroha, Tehsil Riti, District Katni, on the ground that private respondent number 5 Neetu Burman had secured more marks than her and therefore she is entitled for appointment. Full stop. It is submitted, next para, it is submitted that this consideration of Neetu Burman securing higher marks is based on erroneous facts. Next para. Shri Rakesh Singh comments that the two issues are involved in this writ petition. One issue which has been considered by the authorities below is that certificate 10+2 issued by open school board is valid or not. Second issue is in regard to the local residence of the ये private कमिश्नर साहब के सामने नहीं था। हाँ ठीक है, मत रहने दीजिए, हाई कोर्ट के सामने तो है ना जी, कलेक्टर ने इसको डिस्कस किया है। Commissioner was bound to discuss this issue. Next paragraph. It is submitted that as per the marriage agreement enclosed by the private respondent along with her return as annexure R52, it is evident that private respondent Neetu Burman had entered into a contract of marriage with one Shri Ramdas Burman, resident of village Pipariya Paroha, and on the strength of the said marriage agreement / consent dated 6/6/2011, she had submitted her candidature. Full stop. It is submitted that on the basis of the said marriage agreement, collector and commissioner have erred in treating her to be a local resident of village Pipariya Paroha, Tehsil Riti, District Katni, and has passed orders in favor of the private respondent. Full stop.
it is submitted that Burman community comes under scheduled caste. Full stop. There is no recognition of Chhod Chutti as is mentioned in Annexure R52, wherein it is mentioned that Neetu Burman was married to one Ashok Kumar Burman, son of Santosh Kumar Burman, resident of Kaimor. Full stop. Kaymore है Kaimor की spelling. Full stop. Her marriage was performed in the year 2001. She lived with Shri Ashok Kumar Burman for 7 years. Thereafter, for certain personal reasons which are mentioned in the affidavit, she had sought divorce as per the local traditions through Chhod Chutti inverted commas में लिखिएगा, and has no relationship with said Ashok Kumar Burman, and thereafter she had entered into a agreement of marriage / consent with Shri Ramdas Burman. Full stop. Next paragraph. Even if this aspect of Chhod Chutti is accepted, though Shri Rakesh Singh vehemently argues that no such tradition is brought on record, that divorce is permissible through the practice of Chhod Chutti in the community. But the main issue is that whether after Chhod Chutti a legal and valid marriage was performed by the private respondent Neetu Burman with Ramdas Burman, and said marriage and the affidavit of marriage / consent can be treated to be a valid marriage permissible under Hindu law, because it is nobody's case that the private respondent is not a Hindu and the provisions contained in Hindu law are not applicable to the case of private respondent. Next para. When all these aspects are Shri Tiwari for किसके लिए आए थे? Respondent number 5. Respondent number 5 supports the orders of the collector and commissioner and submits. Order of collector is against me. अच्छा हमारे against. अच्छा. It supports the order of the commissioner and submits that फिर आपके अंक तो इससे कम है इंटरवीनर से. इनको तो तब भी नहीं मिलेगा. अगर बेनिफिट मिलेगा तो इनको मिलेगा. क्या तो किसी स्थिति में नहीं मिलेगा. हाँ ठीक है, आप तो जाएंगे अभी. हाँ हम जा, हमारा नुकसान है. My submission in this case is that proceedings were carried out in the year 2010-11. We are not. I am not going to. I'll have to see the things as they exist. उसके 33.8 है परोहा के, आपके 33 हैं. ठीक है ना. ओपन स्कूल की मार्कशीट में दोनों की मान्य करूंगा. ठीक है. उसके बाद में ओपन स्कूल की मार्कशीट के नंबर दोनों को देने के बाद में जो स्थिति कमिश्नर ने जो किया है. सर ये जो इंटरवेंट है ये 2011 से 2017 तक माइलॉर्ड किसी भी केस में अपीयर नहीं. नाइदर दे हैव इंटरवेंट. ठीक है, छोड़िए, उससे हमें मतलब नहीं. जस्ट एट द हाई कोर्ट लेवल माइलॉर्ड. ठीक है, आने दीजिए. उससे उनका राइट नहीं चला जाएगा. लिखिएगा क्या लिखा. of the commissioner, order of the commissioner, and submits that since commissioner has accepted the qualification acquired by the petitioner by the private respondent and the proposed interview and the intervener Ranu Parwa, therefore they being. रानू परवा यहाँ नहीं थी कमिश्नर. ठीक है, इसमें लेकिन कलेक्टर ने तो कहा है ना. Neither she was before the collector also. सिर्फ objection at the time of appointment my lord objection पेश किया था उन्होंने. ठीक है, करेंगे. रुक जाइए, प्लीज मत डिस्टर्ब करिए. क्या लिखा.
accepted the qualification obtained by private respondent and another and the proposed intervener, Ranu Parwa, from the state open school. Therefore, appointment of Neetu Burman having secured higher marks should be given a seal of approval. Next pair. Shri अमर प्रकाश गुप्ता Amar Prakash. जी Amar Prakash Gupta for the proposed intervener submits that if the marriage certificate of Neetu Burman is discarded, which has not been arbitrarily considered by the learned additional commissioner, then appointment is to be given to a person who is more meritorious between the petitioner and the proposed intervener. Next pair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record. Next pair. There is no document on record to show that the qualification obtained from State Open School Board is not a valid qualification. Therefore, to that extent, order of the additional commissioner deserves to be upheld and is upheld. Next panel. Now the next issue which emerges for consideration is in regard to residence of Neetu Burman, private respondent Neetu Burman. Full stop. In the eyes of law, marriage on an affidavit or a contract एज ए वाइफ उसका नाम अब रिकॉर्ड में आ भी गया अब आ होगा गया होगा। हम उस तारीख को देखेंगे जिस तारीख को ये एप्लीकेशन उस दौरान तो नहीं चलेगा। फुल स्टॉप के बाद है इन द आइज ऑफ लॉ। इन द आइज ऑफ लॉ, marriage agreement on an affidavit is not a valid marriage. Full stop. On the date of the application, her name was not shown in any government document as wife of Shri Ramdas Burman. Full stop. Fact of the matter is that once this court has come to a conclusion that marriage on an affidavit agreement is not a valid mode of marriage prescribed under the Hindu law or under the Special Marriage Act, that so-called marriage on affidavit cannot be given approval. So to hold that Neetu Burman was duly married wife of Ramdas and thus had become a resident of village Pipariya Parwa, which was a condition for appointment of a Anganwadi Karyakarta. That is, the candidate should be a local resident. Full stop. Since her marriage is not acceptable in the eyes of law, she cannot be treated as a local resident on the strength of marriage contract, agreement, consent, as is available in the form of annexure R52. Therefore, that marriage being not sanctified, is sanctified in the eyes of law, claim of appointment of Neetu Burman being dehorsed the provisions of law deserves to be set aside and is set aside. Stop. Matter is relegated to the project officer, Integrated Child Development Project RETI, to issue appointment order in strictly in order of merit, which was prepared after discounting the claim of Neetu Burman, and whosoever is more meritorious be given appointment order as Anganwadi Karyakarta for Pipariya Parwa village, Tehsil Riti, district Katni. Let this exercise be carried out within 60 days of communication of this order. Pehla kya?
बीच में लिखिएगा। बर्मन एससी है ना, ये पक्का है, ट्राइब तो नहीं है? कुछ एससी में भी आते हैं। अरे ओबीसी भी आते होंगे, ट्राइब तो नहीं है ना? नहीं। बस वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मिल गया। नोट कर लीजिए, शकुन भाई वर्सेस सिया भाई करके है, 1999 का 2 MPLJ। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। हाँ, उसमें ऊपर देखना है I am guided by a decision of Madhya Pradesh High Court in Shakun Bai, widow of Somnath Kushram and others versus Sia Bai, widow of Somnath and others, 1999 bracket में 2 bracket close MPLJ 307, where the coordinate bench has held that amongst the Gond scheduled tribe in the central India region, marriage or dissolution of marriage through chhod chutti is one of the legitimate and customary practice to dissolve the marriage. Full stop. Honorable coordinate bench has dealt with the aspect in the light of the book by celebrated authors R.V. Russell and Hira Lal, namely within inverted commas, the tribes and castes of central provinces of India, inverted commas close, which contains article on castes and tribes of India, and has held that chhod chutti is one of the accepted ways of relinquishment by the earlier husband. Full stop. It is mentioned that as per the customs, if 5 prescribed acts are performed, namely chhod chutti, that is relinquishment by the earlier husband, comma, payment of dava, DAVA, that is compensation money to the earlier husband who relinquishes, comma, by the new husband who accepts the women anew. Third, breaking of old chudis and putting on of new chudis provided by the new husband and the social feast, then it is sufficient proof of divorce from the earlier husband and marriage to a new husband. However, these customs are required to be proved and established, and they cannot be deemed to be ingrained for other castes like Burman. But there is no such pleading nor material available on record to prove any of these aspects applicable to the private respondent, and therefore this court is of the opinion that since under the Hindu law the under the Hindu law, marriage on an affidavit with consent is not a valid and acceptable mode of marriage. Neetu Burman cannot be said to be newly married wife of Ramdas Burman, so to treat her to be a resident of village Pipariya Parwa. चलिए. My prayer is that can it be observed कि 2011 से 2015 तक private respondent जरूरत नहीं. Merit will prevail. Number 5, please, sir. जी. Miss Rashi Dua, learned counsel for the
appellant issued notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, call for the record of the London claims traveler. Lordship placed along with MA number 1167/6. पर्ची पर लिख कर देगा। नंबर लिख कर देंगी मैडम, तो नंबर लिख कर देंगी तो अलॉन्ग विद कर दीजिएगा, लिस्ट अलॉन्ग विद। सीरियल नंबर 6 सारा श्रीवास्तव। So it's a case of termination. And as per the order of this honorable court below, the D record was directed to be made available. आगे डी रिकॉर्ड That has come now. Lord, the petitioner has challenged. Initially, Lord, this petition was filed for a direction to be issued to the respondent to supply the copy of order of termination. The first leave was sought. And thereafter, Lord, when the return was filed by the respondents, they, Lord, stated that he was already terminated on 8/3/2010. Therefore, Lord, we sought and we filed an application for amendment. That application was allowed by this honorable court, Lord, of wide order dated 8/3/2010. And we incorporated that the amendment. Yes, we incorporated the amendment and relief 7 Roman 4 was added. Now, Lord, the facts of the case is like this, Lord. इसकी प्लीडिंग कहाँ है रिलीफ 7/4 के लिए? प्लीडिंग भी है सर, मैंने अमेंडेड पिटीशन भी पेश कर दी। बताइए। ग्राउंड्स में तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं आपके। है सर। वो आपको मैं ओरिजिनल कॉपी भी दे पाता। नहीं ओरिजिनल कॉपी नहीं, मेरे पास जो पिटीशन है इसमें रिलीफ में अमेंडमेंट लगा हुआ है और प्लीडिंग में अमेंडमेंट एक लगा हुआ है जी। बस प्लीडिंग में सर दो अमेंडमेंट हुए सर। एक तो ये हुआ कि जिसने हमको चार्जशीट इशू करी है, नहीं आपके ये पहला अमेंडमेंट ये है that the grievance of the petitioner is that the order of termination has never been communicated to him since the date of passing of order. Alternatively, the petitioner has changed the order of termination. Alternatively क्या होता है समझ में नहीं आया। The order of termination has never been communicated to the petitioner. It is therefore a recurring cause of action. Thus, there is no delay in filing of the instant petition. ये तो पैरा 4 में आपने अमेंडमेंट किया। Sir, 5 point. 5 point. Just. कितनी अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल की? 2 है सर जी, 2 है। एक से P8 और P9 हमने जो किया है वो दैट वाज अलाउड बाय ऑर्डर डेटेड 20/1/2021। एक तो ये लगी है 15738/2017 जी। दूसरी आइए कौन सी बताइए जरा देखें उसको। जी मैं बताता आइए this is first आइए, second आइए, so that application was allowed by this honorable court wide order dated 8/3/2010. उसको आपने इनकॉर्पोरेट तो किया नहीं आपके जूनियर ने? सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकॉर्पोरेट में चेक कर लेता हूँ। मैं आपको अपनी पिटीशन की कॉपी दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन पीछे लगी हुई है आपकी जी, ये अमेंडमेंट की, जिसमें आपने 5.11 जोड़ने के लिए बोला है और रिलीफ क्लॉज 7.5 जोड़ने के लिए बोला है। आइए नंबर 9137/20 है ये अलाउ हुई है। ये सब पैराग्राफ 15 में। एक सेकंड, डेट क्या बताई आपने ऑर्डर की जिस तारीख को अलाउ हुई है? ये अलाउ हुई सब 8/3/2010। 2010 तो पिटीशन है 22/10/18।
22/10/18 अलॉन्ग विद रिजॉइंडर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की थी जी। वो देखें क्या है। जी सर। जी फिर उसके बाद में एक और ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन क्या फाइल की आपने? सर दूसरी एक की थी 9137 जी, दूसरी एप्लीकेशन इस बात 2020 की। जी, जी वो एप्लीकेशन इस बात की थी कि जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं हाँ हाँ उन्हीं ने हमको शो कॉज नोटिस दिया, उन्हीं ने चार्जशीट वो अलाउ हुई वो वो एप्लीकेशन, अलाउ। तो वो इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया आपने? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर दूसरा वाला अमेंडमेंट भी इसमें अमेंडेड पिटीशन में इनकॉर्पोरेटेड है। मेरे पास नहीं है। तीसरा वाला है अमेंडेड पिटीशन देखें सर, अमेंडेड पिटीशन ही तो मैंने काफी उसमें डिटेल में उसको मेंशन किया। यहाँ जो पिटीशन की कॉपी है आई डीम दैट इट इज एन अमेंडेड कॉपी। सर एक मिनट देख लो क्या मैं। और देखिए ना, ये देखिए, बताइए कौन सी। This is amended copy. In the original copy. अमेंडेड कॉपी में 5.11 है, पैराग्राफ देखिएगा। P9. पैरा 5.11 और क्लॉज 7.5 दो चीजें हैं आपके अमेंडेड पिटीशन में नहीं है। सर इसमें ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है। फिर देखिएगा, अमेंडमेंट as were allowed from time to time have not been incorporated by the petitioner। एक तो अमेंडेड है सर, एक अब तो एक से हो जाएगा तो इतने में दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो दूसरे के बगैर आप तैयार हैं। वो तो जरूर। They submitted that second amendment which was like फाइल दीजिए। किस तारीख को अलाउ हुई थी सेकंड एप्लीकेशन आपकी? सर ये हुई थी IA 913720 वाइड ऑर्डर डेटेड 20/1/21। सेकंड अमेंडमेंट contained in IA 9137/2020 which was allowed wide order dated 20/1/2021 is yet not incorporated in the petition. Full stop. Thus, for the fault of the counsel for the petitioner, since amendment has not been incorporated for over a period of 2 years, this case has been wrongly listed for final hearing, final disposal in the motion stage. Pleadings are not complete. Amendment is yet not incorporated. IA 9527/22 is dismissed. IA 9527, an application for final disposal of the writ petition at motion stage is dismissed. Let appropriate application be filed seeking condonation of delay in not incorporating the amendment, and then ये तो है आपका ओरिजिनल पिटीशन अमेंडमेंट नहीं है ना। and list this case for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. सीरियल नंबर 7 की विकास मिश्रा वो वाला हटा देना, कंडोनेशन डिले वाला हटा देना, कंडोनेशन डिले वाला हटा देना। इसकी आइए 9527 list for final hearing in part B of the cause list। ये बताइए विकास जी। देखिए श्री विकास मिश्रा is for time to cure the default pointed out by the registry. Is granted 2 weeks time to cure the default peremptorily. List thereafter. डिफॉल्ट के बाद कैसे चलेगी यार? आपने कब लिया था स्टे? डिफॉल्ट नहीं, क्यों नहीं दिया पीएफ? 11/1/2023 फिर क्यों नहीं दिया पीएफ आपने? स्टेट में सर पीएफ नहीं हुआ था सर। पीएफ अभी लास्ट डेट में जो लगा था सर 17/2 को उस दिन हुआ था। फिर नॉलेज में सर मैं आज ड्यूरिंग द कोर्स डिफॉल्ट बी क्योर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। नहीं नहीं नहीं,
स्टे लेने के बाद दिस इज नॉट अ गुड नहीं प्रैक्टिस। सर Fine. उस दिन हम अपीयर नहीं हो पाए थे इसलिए नहीं हो पाए होंगे। फर्स्ट हियरिंग में सर फर्स्ट हियरिंग नहीं अपियर हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर फर्स्ट हियरिंग में स्टे नहीं हुआ था सर। एक सेकंड, नहीं हुआ, ठीक है। नोटिस नहीं हुआ था फर्स्ट हियरिंग में। जिस दिन स्टे हुआ था सर 11/1/23 को ही तो स्टे हुआ है। हाँ सर उस दिन नोटिस नहीं हुआ था सर। स्टेट को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा जी। था। फिर उसके बाद सर 17 आउट ऑफ स्टेशन, फिर आपने टाइम बढ़ाया 17/2 को, ये लॉर्ड फिर आपने नोटिस कर दिए जब आप कोई आया नहीं 24/2 को, तो क्या करते? फिर आपको पीएफ देने, आप आए ही नहीं ना, इसलिए सर मैं आज ही कर देता। नहीं, ये सब नहीं, कॉस्ट पे टाइम देंगे। देखिएगा, पिटिशनर is now seeking time to cure the default. He is enjoying the stay order on his transfer. Full stop. Stay was granted on 11/1/2023. आपको तो रिप्लाई फाइल करने से किसने रोका था? नहीं सर मैं फॉर्मल हूँ सर, मिशन ये फाइल ये फाइल दी रिप्लाई क्या मेरिट पे बताइए, मेरिट पे बताइए कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है इनका? My lord, the petitioner has been transferred from Mandala to Damu. ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, इनका ट्रांसफर हो सकता है, इतना बता दीजिए बस, कहाँ है प्रोविजन? Yes, my lord. If my lord may please come to page 18 for reply. जी, page 18, yes. My lord, clause 25 of the contract. जी, पढ़िए। आपकी पदस्थापना परिवर्तन करने का अधिकार राज्य आजीविका फोरम अथवा NRLM को होगा। जी, My lord, page 32, clause 32 in the same page. जी, आप same page, my lord, page 18. 32 एक सेकंड रुकिएगा। Reply. Page clause 25 and 32, my lord, are relevant. 32. आपकी पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर मिशन के जिले में परिवर्तन उपस्थानांतरित करने का अधिकार राज्य आजीविका फोरम को होगा। जी, My lord, तो ये कौन सी पॉलिसी लगाई थी इन्होंने इस पे स्टे दिए हैं? my lord, if I may, एक से रुक जाइए। P4 की 9.1 पेज नंबर 21 है। हाँ, जी, 9.1 के बारे में क्या कहा आपने? ये तो बात का है, आपका जो आप दिखा रहे हो 2013 का है, ये आपके ही अपर मुख्य सचिव ने 2020 में जारी किया है। if my lord may please refer to annexure R24 R24, yes, and page number 26. page 26, yes. My lord, this issue has already been settled by this honorable court. We have filed the judgment. They have taken into consideration the same objection that are being raised before this honorable court. अच्छा, क्या कहा उन्होंने? My lord, may please refer to my lord last paragraph of page 26. Learned counsel for the petitioner has placed reliance on circular dated 24 to 2020, wherein there is no provision of transfer of a contractual employee because his services is not permanent in nature, but his place can be changed on extreme condition and on administrative exigency. But the order does not reflect any condition or administrative exigency. My lord, बताइएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है? There is your appointment order. वही तो बढ़ा था number 26. भी लगा सर Page number 26 पे Page number 18 में कंडीशन थी था इनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की है। ये एग्रीमेंट है सर। हाँ, ठीक है, तो क्या फिर उसके बाद क्या बचता है? देखिएगा, श्री विकास मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। सर मेरा भी सुन लीजिए। Delay in payment, हाँ, delay in payment of PF is condoned as counsel for private respondent
Private respondent, mission my lord, 2 and 4. For 2 and 4. 4 is appearing and has already filed reply. ये बताइए. I have chosen my transfer order on certain grounds, Your Lordship. जी. First ground is there is a आपको provision. सिर्फ एक ग्राउंड पे स्टे दिया गया था कि 9.1 जो है वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं किया था. ये इशू ऑलरेडी WP 18139/21 में डिसाइड हो गया. ठीक है. सर ये WA 281/2021 हाँ. डिवीजन बेंच आई हैव फाइल्ड दैट ऑर्डर P5 W8281/2021. P5 पेज नंबर 24 एंड 30. जी. इसको देखें सर एक बार. हाँ बिल्कुल देखेंगे. इसमें सर डिवीजन बेंच ने सर ये बोला है देयर इज ए क्लॉज 9.1 under which the a contractual employee can be transferred but only on the special circumstances. वो तो उनको डिटरमाइन करना है ना. हाँ. कोर्ट ने सर इसी पे बोला है. ये ऑर्डर तो सर्टिफाइड नहीं हुआ ना. नहीं. 18139 सेटिस्फाइड हो गया क्या डिवीजन बेंच से? नहीं सर उसको तो अगर चैलेंज नहीं किया तो उसका नहीं बोल सकते सर. लेकिन ये जो सर इस पिटीशन में जो सर बोला है और दूसरा सर मेरा अकाउंट है रेशनलाइजेशन. ये जो सर ऑर्डर पास हुआ है इम्प्यून ऑर्डर है सर. इसमें रेशनलाइजेशन के तहत इन्होंने पास किया है. आपको नहीं जाना तो आप घर जाओ अपने. तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हो. ये रेशनलाइजेशन के बारे में सर ये ऑर्डर बोलता है बिकॉज रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज बीन ट्रांसफर्ड इन प्लेस ऑफ मी. सो और सर इनकी जो पॉलिसी है सर 24/2/2020 एनेक्जर P4 सर इसमें रेशनलाइजेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है. मैं लॉर्ड ने जब फर्स्ट हियरिंग में सर देखा था आपने मैकेनिक फॉर ए मोमेंट की लॉर्ड मैकेनिक से एनेक्जर P1 इम्प्यून ऑर्डर सर पेज नंबर 13 में भी सीन. पेज नंबर 13 सर ये बॉटम में सर देखें क्लॉज 2 जो है कर मेरिट पेज नंबर 13. यस. कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर युक्तिकरण आदेश जारी किया जा रहा है. Now, what is the policy regarding the rationalization? If I am a surplus employee, Your Lordship, then how the respondent number 5 can be brought in my place, Your Lordship? There is no policy regarding the rationalization. They have nothing said in the reply about that. जी बताइए. While the transfer was on administrative grounds. हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में. पढ़िएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है. ये जो आप पढ़ रहे थे ना पेज 26 पर. 26 पे तो ऑर्डर है. क्लॉज पढ़ रहे थे ना आप. 26 पे नहीं पेज नंबर 17 है. हाँ 17 25 18 पर 25. पेज नंबर 18 में दे आर एक्सेप्टेड दैट वाला नीचे लिखा है. पेज नंबर 18 पे उपरोक्त वर्णित निबंधन एवं सेवा शर्तें मुझे स्वीकार है. जी. Undertaking given by the policy. My lord, also I bring to my lord's attention to page number divisional bench order of this honorable court at page number 19. 19 क्या कहा. WA number my lord 930 of 2021. जी क्या कहा. My lord, findings are relevant at page number 23. Para number 6 is the finding, my lord. In the view of the specific stand of the respondent that the services of the appellant are transferable, and further that the appellant has been transferred after nearly 6 years from the present place of posting and on the ground of administrative accidents. Herein, my lord, the petitioner has been working since 8 years at the same post. My lordship, may kindly see the judgment of the division bench, lordship. Page number 26, lordship. Page number 27, lordship. Para number 6, lordship. Learned counsel for the respondent number 5 submitted that the appellant and her husband had applied for their posting at one place in Jabalpur solely on the ground of husband and wife being government employed in the same department. It is further submitted that the old age parent of respondent number 5 para number 7. On a bare perusal of the impugned order of transfer, it is graphically clear that the transfer has been issued in reference to clause 9.1 of the circular dated 24/2020 passed by the Punjab and Rural Development Department, Government of India. The said circular was issued in respect of delegation of administrative and financial parts under the MP Raj Gramin Ajivika Mission by suspending all previous circulars. As per clause 9.1 of the said circular,
is provided that the service of the contractual employees are meant for a specific place and for a specific work, and therefore the services are not transferable. However, considering the administrative arrangements in special circumstances, services of such employee can be transferred. In the impugn transfer order, it is stated that the appellant and other employees whose names are mentioned in the set list have been transferred, keeping in view of the administrative exigencies. The transfer of the appellant cannot be said to be under rationalization because the respondents have failed to establish that the appellant is a surplus employee at Jabalpur. On the contrary, in place of appellant her transfer, the respondent number 5 has been posted. There is nothing on record to indicate that the appellant has been transferred under rationalization. Transfer of contractual employee has been permitted by virtue of clause 9.1 of circular dated 24/2/2020 only in special circumstances. The respondents have failed to show that there are special circumstances under which the appellant has been transferred. It is not the case of the respondent number 2 and 4 that there is any administrative exigency in respect of continuation of the appellant at Jabalpur. The respondent number 5 and her husband have been transferred at Jabalpur on their own request. Which is नेशनलाइजेशन का ग्राउंड कहाँ लिया है आपने? मैंने लिया सर। कौन सा ग्राउंड पढ़िएगा जरा। My lord, I may submit. एक मिनट रुक जाइए। कौन सा ग्राउंड है आपका रेशनलाइजेशन का? आपसे जितना प्लीज नहीं पढ़ के बताइए ग्राउंड नंबर कौन सा है? इस हाईकोर्ट का सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप लोग हवा में बहस करते हैं, जो प्लीडिंग नहीं होती उस पर बहस करना चाहते हैं। यही आपको विद्वान अधिवक्ता बनाता है। चलिए, नाउ डोंट डिस्टर्ब, ऑर्डर सुनिए। पिटीशन इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 26/12/2022 passed by the respondent chief executive officer, sorry, by the joint commissioner within bracket administration, Madhya Pradesh State Rural Livelihood Mission, transferring the petitioner whose name appears at serial number 35 9, please 35, whereby petitioner is transferred from development block Mandla to Development Bank Chavera, District Jammu, on the ground that in terms of para 9.1 of the order dated 24/2/2020, petitioner being a contractual employee is not liable to be transferred. Full stop. Next para. श्री, आपका शुभ नाम बताइए। मनन अग्रवाल। मनन अग्रवाल नहीं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा। Learned counsel for the petitioner has placed reliance on the received judgment of Honorable Division Bench of this court in WA 281 of 2021 bracket में सीमा पासी versus State MP and others decided on 25/9/2021, wherein reading from para 8 it is submitted that there is no wherein it is held that transfer of the appellant cannot be said to be under rationalization, because the respondents have failed to establish that the appellant is a surplus employee at Jabalpur. Full stop. Next paragraph. Shri Manan Agrawal in turn submits that respondents 2 and 5 have filed their reply. 2 and 4. 4 have filed their reply. Full stop. Copy of appointment order of the petitioner is available on record as annexure R21, dated 6/5/2013. Full stop. In this order, clause 25
provides for the right of NRLM to change place of posting of the petitioner. Full stop. Similarly, clause 35 gives a right of change of district oblique transfer to the State Livelihood Forum oblique NRLM on administrative grounds. Full stop. It is submitted that under similar facts and circumstances, a coordinate bench of this court dealt with this issue WP 18139/2021 and after noting judgments of earlier benches in Ashok Tiwari versus Madhya Pradesh Textbook Corporation and another 2010 to MPLJ 662 and also in case of Srimati Vandana Dandotia versus State of MP and others 2013 SCC Online MP 5090. It is held that once clause 15 of the contract provides for change of place of posting on administrative grounds from one district to another, then services of the contract employee being governed by the terms of the contract are transferable, and this aspect has been decided by full bench judgment of this court in Ashok Tiwari Supra. Full stop. Next fact. Taking all these facts into consideration and also a glaring fact that though learned counsel for the petitioner has argued in the teeth of division bench decision of this honorable court in WA 281 of 2021, but has not taken any ground that petitioner was transferred in the name of rationalization and that policy will not be applicable. Full stop. In absence of a ground taken and pleaded in the petition, petitioner cannot be permitted to argue without there being specific pleadings in this behalf. Next para. In the present case, it is submitted by Shri Manan Agrawal that petitioner was posted at Damoh for last 8 years. At Mandla, my lord. At Mandla for last 8 years. Full stop. Now, when this case is taken up in April, another ground of midterm transfer is also satisfied in as much as by now examinations of children are over or are going to be over 15th of April 2023. And therefore, in view of the fact that since there is a condition in the appointment order itself, which is a contract brought on record by the respondent as R21 and which is duly signed by the petitioner, since there is a clause permitting the respondents to change the place of posting from one district to another, and petitioner had agreed to such change of posting, no indulgence can be shown in the administrative discretion of the authorities to transfer the petitioner from one place to another. Therefore, petition fails and is dismissed. 8 साल से बोलेंगे हम 8 साल से हैं सर। मेरा जो लास्ट ट्रांसफर हुआ 27/8/2021 को हुआ जिस ब्लॉक में भी पदस्थ हूं मैं। Block is there in Damoh district for 8 years. I don't have the presence of my senior भी also. नहीं, ये किसने सिखाया आपको ये? कौन है सीनियर आपके? कौन है सीनियर आपके? Who's your senior? AP सिंह सर। उन्होंने आपको ये बताया कि वो आएंगे नहीं और उनकी प्रेजेंस डलवा दी जाए? नहीं बताया सर। It was तो फिर आपने क्यों कहा? I beg your pardon, my lord. Serial number 8. 25 Kumar Bagmani. Sir. Lord, this is an IA for modification. Actually, my voice is not clear. नहीं ठीक है। Then I will argue the case, my lord. नहीं बस संक्षेप में बता दीजिए क्या मॉडिफिकेशन? सर the impugn order bail order था सर 15 लाख डिपॉजिट करने का।
उसके ऊपर तो हमने जजमेंट देखा सुप्रीम कोर्ट का। जी जी सर। अर्लियर काउंसिल ने अगर कंसेंट दी थी जी तो काउंसिल को खड़ा करिए कि उन्होंने कंसेंट गलत दी थी, उनका एफिडेविट फाइल कर दीजिए। सर उन्होंने कंसेंट दी थी सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी। आपका गला कब ठीक हो जाएगा तब सुनेंगे इसको, बताइए। सर अगले हफ्ते लगा देते हैं, गला ठीक कर लीजिए इसको, क्योंकि बहस पूरी सुननी पड़ेगी आपकी। बिकॉज आई हैव अ जजमेंट दैट वंस अ काउंसिल गिव्स कंसेंट and obtains an order, then he cannot wriggle out of that consent. बताइए कब आपको सुविधा, कब डेट बता दीजिए, उस डेट पे। My lord, one humble submission, if my lord kindly take it into consideration. सर मेरा इतना सा निवेदन है सर, कंसेंट अगर दी भी है, हमारा ये कहना है कि सर फाइनेंशियली हम इतने वायबल नहीं है कि हम उसको फुलफिल कर पाए, तो एटलीस्ट योर लॉर्डशिप काइंडली डिसाइड ऑन मेरिट सर, इतना सा निवेदन है सर। ठीक है, हम उसको मेरिट पे डिसाइड कर देंगे जी। फाइनेंशियल वायबिलिटी का क्या लगाया प्रूफ आपने? सर आपने इसके अंदर में बीपीएल कार्ड का जो पूछा था सर, बीपीएल कार्ड 10,000 रुपए जिस परिवार की वार्षिक आय रहती है, 10,000 नहीं रहती, 40,000 रहती है। नहीं सर 40,000 जो इनकम सर्टिफिकेट है तहसीलदार सर 36,000 से नीचे का जारी नहीं करता। और सर जितना मैंने सर्च किया इसके बारे में सर, कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाटा तो नहीं मिला। ले आइए ना, डेटा ले आइए, बहस करिए। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, मैंने बहुत सर्च किया है, स्पेसिफिक ऐसा कोई डाटा नहीं मिला सर। ज्यादा से ज्यादा कई न्यूज़पेपर की कटिंग्स आ रही है कि 10,000 रुपए तक हो, बीपीएल कार्ड इशू लॉ नहीं होती। जी जी, इसलिए सर मैंने वो प्रेजेंट नहीं किया है सर। इसके अंदर में पंचायत से सर्वे का वेरिफिकेशन लगाया सर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जो लोकल वहां पर है, इनके सर पिताजी का सर ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना चलती है उसका सर कार्ड लगा दिया है। बीपीएल का कार्ड है इनके पास में? सर बीपीएल का कार्ड है, अनेक्स किया है सर मैंने आईए में। और सर ये राशन भी लेते हैं। सुनेंगे आपको, देखिएगा। श्री प्रतीक कुमार वाघमारे जी submits that today he is not keeping good health on his request। आप बाहर से आते हैं? सर भोपाल से आता हूँ, यहाँ पे भी यही प्रैक्टिस करते हैं ना सर, डीआरटी में भी करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ रहते हैं कि बाहर से आते हैं? सर एक फ्लैट है अरे भाई, किराए से ले रखा है, रहता नहीं हूँ सर, परिवार भोपाल में। आएंगे कब यहाँ पर, अगली बार कब आएंगे बताइए? सर आपको सर 24th के लिए लग कर दें सर, 25th के लिए कर दें। 25th के लिए लिस्ट ऑन 25th अप्रैल जी 2023। चलिए जी, ऑब्लिक ऑन हिज रिक्वेस्ट करके करिएगा। नंबर 9 आशीष हेमंत कुमार चौहान। The reply is ready to be filed, Lordship. I am filing today, Lordship. क्या within the course of it. क्या फाइल कर रहे हैं? Reply, Lordship. ठीक है। ये श्री आशीष श्रोती, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री पारिक submits, Paresh Parik submits that he is filing reply to the miscellaneous petition during the course of the day. Let's talk. क्या मैटर है ये? The matter related with the application under order 1 rule 10 filed by respondent number 6 that has been allowed to that. I am the plaintiff. That order is challenged by the plaintiff. आपका कहना है कि plaintiff is the master of the suit. He has to decide which party is necessary or which party. And in the suit itself, Lord, she is the daughter of the earlier defendant number 3. In the suit itself, there is a specific averment that we are not claiming any relief against defendant number 3. Thereafter, he expired. With the permission of the court, his name was deleted. Thereafter, the respondent number 5 made an application saying that he has entered into an agreement with defendant number 1 and 2, and therefore he should be implemented. That application was rejected. Then he set up, it is our case, that he set up this respondent number 6 and filed another application under order 1 rule 10 in her name. Then in the meantime, when they are not, she is daughter of defendant number 3, earlier defendant number 3. जब धनराज पिल्लई पालीवाल जी के खिलाफ कोई रिलीफ ही नहीं मांग रहे, उनकी डॉटर को क्या हक है? But Lordship, the fact is this, that the property is the instructed property. That is there. So partition हो गया क्या? No degree can be passed against defendant number 3 or this defendant. No partition was applicant. They are not. You are claiming your relief against whom? Again, number 1 and 2 are against defendant number 1 and 2, and now the newly added respondent number 5. Who has entered into a agreement with number 1 and 2? Yes. तो ये लोग क्या लगते हैं आपके फैमिली ट्री में? सर respondent number 3 जो थे वो अंकल थे हमारे, my father's brother. Okay. Yes. And in paragraph ये क्या है? मुकेश कुमार और पुष्पा बाई क्या है? ये दूसरे भाई के बच्चे हैं। नहीं, लेकिन क्या इनके खिलाफ रिलीफ मांगने से पूरी फैमिली प्रॉपर्टी में क्या पार्टीशन होती है? नहीं, पार्टीशन नहीं है ये। It is only seeking a declaration that the defendant number 1 and 2 have no right to
deal with this property. They are trying to sell it off, and therefore that gave me a cause of action, and therefore we have They are filed this trying suit. to sell a joint family property. No, we say that this has been given to us by way of will. तो विल प्रमाणित हो गई आपकी? वो इसमें होगी सूट में, but then in paragraph फिर आने तो उसको पार्टी में paragraph 16 जॉइंट प्रॉपर्टी लॉ बहुत सेटल्ड है, जॉइंट प्रॉपर्टी है ना। मैंने इसीलिए आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, पार्टीशन हो गया क्या? पार्टीशन अगर हो गया और आप अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हो, पार्टीशन के लिए नहीं, हमारा कहना ये है, आपकी बात समझ गया। आपका ये कहना है कि आपको यह जो सूट प्रॉपर्टी है विच इज ए कंपोजिट प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो विल से मिली है, पूरी मिली है, एक हिस्सा मिला है, एक हिस्सा मिला हुआ, therefore you are not claiming against defendant number 3 who has been deleted, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई हिस्सा मिला है तो बाकी जितने को पार्टनर्स हैं उन सबको अधिकार है ऑब्जेक्ट करने का। सर मेरा सिर्फ इतना कहना था कि सूट में हमने स्पेसिफिक लिखा हुआ है, उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? व्हाटएवर सर, ये देखिए डिफिकल्टी ये है कि इट वाज एट द स्टेज ऑफ एविडेंस, देन रिस्पोंडेंट नंबर 5 फाइल्ड एन एप्लीकेशन, इट रिमेन्ड पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, ही हैज बीन अलाउड टू बी जॉइंट, देन दिस एप्लीकेशन इज फाइल्ड, सो इट इज नॉट व्हेन इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट। आपको सिर्फ इतना बताता हूं, आज की तारीख में अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हर को पार्टनर, हर कण का हिस्सेदार है और भागीदार है। That question may not arise because when we are saying, if that question will not arise, then your suit will be decreed only in relation to that. yes, that is the case actually. नहीं, When we say in paragraph 16 specifically that we are not claiming any relief law is very well settled. You against may not defendant claim, number 3. but once the interest of co-partner is likely to be affected. But the law is settled on that issue also, that whatever decree is passed in her absence, she is not affected. That is true. That is true. But since it is an undivided property, therefore she has an interest. Undivided नहीं है actually, that is our case, that it has been given to us by way of will. वसीयत से मिली है ना जी, पार्टीशन तो नहीं हुआ ना अभी, बाला वसीयत प्रसाद एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब तक जो है आप उसकी वसीयत के आधार पर बंटवारा नहीं करवा पाएंगे। हमारे फादर की भी वसीयत लॉशिप इन्होंने करवा के रखी है, सेपरेट सूट इज आल्सो पेंडिंग लॉशिप, दिस इज द and that the lady, to my knowledge, she has not come forward still. I am She is not coming forward. my father is the I am the sole full representative lordship that is there. Nobody full representative number 6 के लिए है क्या? 6 के लिए आप 6 के लिए आ रहे हैं, 5 के लिए आ रहे हैं? मैं 6 के लिए आ रहा हूँ लॉर्डशिप, मैंने 6 के लिए ताराबाई के लिए, ताराबाई के लिए आई एम फॉर ताराबाई लॉर्डशिप। चलिए ठीक है, इसको करिए, सूट को एक्सपेडाइट करने के लिए बोल देते हैं और क्या है। कंसेंट कर दें इसको, मेरिट पे लिखाना चाहते हैं, आप जैसा कहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट में थोड़ी प्रॉब्लम। अच्छा लिखिए, this miscellaneous petition is filed by the plaintiffs being agreed of order dated 5/12/2019, annexure P6 passed in civil suit number 19A of 2016 by learned civil judge class 1 Sohagpur district Hoshangabad, allowing an application under order 1 rule 10 moved by the respondent number 6 Srimati Tarabai, wife of Leeladhar Paliwal, daughter of late Dhanraj Paliwal, seeking impleadment in the suit filed by the plaintiffs who are claiming certain portion of undivided property to be theirs on the strength of will. Full stop. Next paragraph. 3. Ashish Shruti submits that petitioner plaintiffs have specifically taken a plea that they are not seeking any relief against defendant number 3, now deleted, namely Dhanraj, son of late Narvada Prasad Paliwal, that is father of the respondent number 6, Srimati Tarabai. Yet application under order 1 rule 10 CPC is allowed. Full stop. This will delay the suit, and in fact the application under order 1 rule 10 filed by Srimati Tarabai is at behest of
respondent number 5 who has entered into an agreement for sale with defendant number 1 and 2, namely Mukesh Kumar and Shrimati Pushpabai. Next para. Shri Paresh Parikh in his turn submits that admittedly property is joint. Every co-partner is a owner of complete set of property. Full stop. So petitioners are not seeking any specific relief against the respondent number 3, but in an undivided co-partnership property, every co-partner has share and therefore has interest in defending the property. Full stop. Unless and until partition takes place and shares of each of the co-partners are delineated, each co-partner will continue to have interest in the whole of the property. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, an impugned order passed by the learned civil judge class 1 is taken into consideration, then it is evident that impugned order has been passed after due appreciation of facts and law on record. Full stop. Since it cannot be said that first party added, namely Tarabai, has no interest in the suit property, the application cannot allowing application under order 1 rule 10 cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed. 2 साल तो आपने यहाँ गुजार दिया, अभी तक तो इतने देर में तो सूट कहाँ पहुंच गया होता. Number 10. बताइए. Issue notice, इनका शुभ नाम बता दीजिए. Vineet Mishra issued notice to the respondent on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Call for the record. Record है. आपका शुभ नाम? Anup Sonkar. In Anup. this matter, Your Lordship, compensation award has been passed in their favor. Thereafter, in the review petition, interest part only has been waived off because the accident was of the 2015. But as per unrevised amount, 8 lakhs has been granted to them, Your Lordship. So that is the settled position in para 19. आपको जब एनहेंस्ड अमाउंट दे दिया, 15 में 4 लाख रुपए था और स्कीम में उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया, तो उनका ये कहना है कि जब 8 लाख रुपए आपको बढ़ा हुआ अमाउंट मिल गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 2015 से. 2019 में 8 लाख रुपए हुआ है ना, 17 में. So only that part has been reviewed. That has तो पूरा इंटरेस्ट हटा दिया जिस. No. जो हायर बिकॉज उस समय 4 लाख रुपए था और 6% का इंटरेस्ट अगर दिया जाता, और जो कि रिवाइज हो गया 8 लाख रुपए 17 से, तो 8 लाख रुपए हायर अमाउंट दिया गया. दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल. जिस तारीख को रिवाइज हो गया उस तारीख से तो 8 लाख पे ब्याज मिलेगा. नहीं, तो 8 लाख रुपए जो जिस दिन अवार्ड हो रहा है, ये रीना देवी में पैरा 19 में डिसाइड किया, आपने भी डिसाइड किया. बताइए. There is a minor judgment also, my lord. There is in this case also, my lord, the date of incidence of 2000. वो ठीक है, समझ गए भाई. डेट ऑफ इंसिडेंस है, हायर अमाउंट की बात कर रहे हैं, स्लैब बदल गया. ये रीना देवी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ये जो है ये कहता है कि अगर स्लैब बदल गया, यू हैव 2 ऑप्शंस. 4 लाख रुपए 6% ब्याज के साथ ले लीजिए या बढ़ा हुआ अमाउंट ले लीजिए. तो बढ़ा हुआ अमाउंट 8 लाख रुपए आपको दे दिया गया. ये बात सही है ना? 8 लाख रुपए दिया गया आपको. अब आप दोनों कैलकुलेट करके देख लीजिए आपको क्या बेनिफिशियल है. It will be taken on next week. नेक्स्ट वीक नहीं, अभी. Because my lord, ये रीना देवी से कवर्ड है ये. only today I have filed the wakalatnama. So what? When was appeal filed? Lord, it is 21/3/23 को फाइल हुई है अपील. It's true, my lord, but it is case of Mr. Manoj Patel. That I have to appear today. That's why I have filed the wakalatnama. श्री नाम बताइए आपका. Anup Sonkar. Anup Soni is not prepared. Sonkar, matter. Sonkar is not prepared with the matter. Full stop. The only issue involved in the appeal is whether for an accident which took place
when the maximum amount of compensation payable was 4 lakhs, which was revised to 8 lakhs with effect from 2017. Then whether petitioner will be entitled to enhanced amount along with interest or not. This issue is already settled by Supreme Court in case of Union of India versus Reena Devi within bracket 2019 का 3 SCC 572. Full stop. Shri Sonkar prays for time to prepare and argue this case. On his request, list this case next week. Serial number 12. Vintage Kumar Gupta. Issue notice on IA 4822/2023 and admission on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Serial number 30. To Dhanbel Soni. My lord, the petitioner was a स्थायी कर्मी. My lord, may see annexure P2, my lord. Sir, 3/9 P2 page 15 sir. 3/9/15 को I was appointed, my lord, for working on collector rate sir. जी. सर उसके बाद P3 देखेंगे सर पेज 16 पर सीरियल नंबर 9 पे मेरा 9 मुझे स्टेटस दे दिया स्थायी कर्मी का. सर इसके बाद पेज 19 पर एनेक्सर P5 सर कोई 3 लोगों ने कंप्लेंट की कि इनकी नियुक्ति फर्जी. तो सर इन्होंने मुझे शो कॉज दिया और शो कॉज देने के बाद सर मैंने P6 पेज 21 पे इसका जवाब दिया. तो इन्होंने सर फिर इम्प्यूग्न ऑर्डर पास. जी. शो कॉज के बाद मैंने जवाब दिया एनेक्सर P6 से सर जी. पेज 20. फिर उसके बाद इन्होंने इम्प्यूग्न ऑर्डर पास कर दिया कि क्योंकि आप स्थायी कर्मी हो केवल आपको निलंबन नहीं सीधे पृथक करेंगे सर्विस से. तो डायरेक्ट बिना इंक्वायरी के मेरे को टर्मिनेट कर दिया इम्प्यूग्न ऑर्डर से पेज 14 सर. तो सर मैं सर्कुलर भी लाया जिस पे रिलाई किया सर. Give actual notice to the respondents on payment of PF by registered AD post. Submitted that petitioner was classified as a permanent employee and could not have been terminated without conducting any departmental inquiry. Full stop. A termination order is passed without conducting any departmental inquiry and is thus bad in law. Next paragraph. Notice is waived by Shri Piyush Bhatnagar for respondents number 1, 2, 3 and 4. Issue notice to respondent number 5, 6 and 7 on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, operation of the impugned order of termination shall remain stayed till next date of listing. बोल दिया ना रिकॉर्ड पे. रिकॉर्ड लिख लिया था 12 में. अभी मैं एमए में रिकॉर्ड तो कॉल कर देंगे. Number 14. Kumar Chansolia. Petitioner is claiming clarity at correspondent number 3 to 5 in the matter of senior selection and fourth pay band, and then controversy has already been decided by this honorable court in more than 500 cases. Similar order P21, P22, it may be also disposed of in same terms of P21 and P22. Emergency. The counsel for the petitioner submits that the controversy involved in this petition is already answered. Page 150 का order कर दीजिए. Court has not expressed any opinion on the merits. Serial number 15. Challenges to order at annexure P1 page 15, whereby without conducting any disciplinary inquiry and without even issuance of show cause notice, the recovery has been directed to be initiated against me. क्या है पढ़िए काय की recovery होगी. They say an allegation was made that certain road was constructed instead of government land on private land. A case went on, my lord, at page 16 before subdivisional officer revenue, and my lord, that gives a reference to an order of the High Court, my lord, which as per us does not exist.
And my lord, the learned sub-divisional officer has ordered that concerned persons be in a recovery be initiated against concerned persons. My lord, I dispute these charges, my lord. I was not even issued a show cause notice. क्या है किस तरीके से काम कर रही सरकार आपकी? In fact, the impugned order is at page 15, my lord. हाँ My lord, may I have a perusal of this? हाँ पढ़िए ना. In fact, my lord, the WP number is 19159 of 2020. It is typing mistake. 19159 of 2020. ये जो टाइपिंग मिस्टेक का बता रहे हैं कि इम्प्यून जो ये डब्ल्यूपी का रेफरेंस आ रहा है चलिए डब्ल्यूपी का रेफरेंस गलत आ गया. चलिए छोड़िए. उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके प्रकाश में आवेदक गणों की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार से की जाना है. कार्यान्वयन रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य आप दोनों महानुभावों द्वारा 2008 में प्रारंभ किया था, जिसके संरक्षण अलाइनमेंट आपके द्वारा किया गया है. इसलिए आवेदक गणों को हुई क्षतिपूर्ति के लिए आप दोनों पूर्ण उत्तरदायी में जिम्मेदार. मतलब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट. अतः उक्त क्षतिपूर्ति का विवरण संबंधित राजस्व न्यायालय राजस्व अधिकारियों से तैयार करवाकर शीघ्र जमा करें. मतलब ओनली द क्षतिपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि माननीय न्यायालयों के आदेश का पालन हो सके. अन्यथा की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग को अवगत कराते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी, स्थापित की जाएगी. मतलब एज ऑन डेट. अरे एक सेकंड. When you are making some allegations, then you are required to prove them. How can you ask them to get some document from the revenue authority? आप आरोप लगाएंगे और आप आरोपी को ही कहेंगे कि जाकर जो है अपना प्रमाण लेकर आओ. कौन सी नौ में प्रावधान है? आपका हम्बल सबमिशन तो समझ गए, कानून तो बता दीजिए. Can you ask the charged officer to collect the evidence against him and produce it before you? Or is it your duty to collect the evidence and prove the charges? My humble submission, my annexure E2 is the order passed by the competent authority. क्या लिखा उसमें? I am not a party in that case. इसमें ये हुआ था कि जिस भूमि पर निर्माण हुआ है, ऑपरेटिव पैराग्राफ नंबर 8. हाँ पढ़िए. अतः संबंधित विभाग लोक निर्माण विभाग जिला सागर को आदेशित किया जाता है कि मौजा स्वयं शासकीय रास्ता मत का उपयोग कर तेंदुखेड़ा से सहजपुर मार्ग निर्माण करें एवं आवेदक गणों की निजी भूमि तत्काल मार्ग निर्माण हेतु डाली गई सामग्री मिट्टी आदि हटवाकर भूमि को उसके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर आवेदक गणों को सौंपे. आवेदक गणों की निजी भूमि पर मार्ग निर्माण से जो क्षति पहुंची है, संबंधित विभाग लोक निर्माण विभाग जिला सागर यह संस्थित करे. उपरोक्त त्रुटि का कौन जिम्मेदार है, उसमें आवेदक गणों की क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए. ठीक है. In pursuance to this, my lord, the communication has been sent, and as on date, my lord, no order of recovery of any quantified amount of recovery. It is the question of proprietary of this order, annexure P1. How can you? It is for you to conduct. इसमें क्या लिखा है? बहुत स्पष्ट लिखा है. संबंधित विभाग लोक निर्माण विभाग जिला सागर यह संशोधित करे कि उपरोक्त त्रुटि का जिम्मेदार कौन है. Where is the inquiry to decide that who is responsible for the? That's what is, my lord, this impugned order that P1, my lord. उसमें तो उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं. जिम्मेदार, अरे ऊपर पढ़िए ना प्लीज. क्षतिपूर्ति के लिए आप दोनों पूर्ण उत्तरदायी एवं जिम्मेदार हैं. तो कहाँ है, किस बेसिस पर आया, ये तो बताएं थोड़ा सा. Although no amount has been quantified. It is not the question of amount, it's a question of fixing the responsibility. Don't try to deviate the issue. Your state officers, they just don't know how to work. Although, my lord, it's not properly worded. Then you admit that it is not properly worded. लिखिएगा. Shri Kapil. No, I don't admit. My lord, may issue notice. I will file. नहीं, I'll mention this. Petitioner is aggrieved of order dated 9/3/2023, annexure P1, whereby respondent number 2 has issued an order fixing responsibility of the petitioner along with executive engineer, the then executive engineer, in regard to road alignment
and has directed them to get a copy of extent of damages prepared from the revenue officer and deposit it before the sub-divisional officer, Public Works Department, Devri, so that proceedings for recovery may be instituted. Next paragraph. Shri Bhatnagar, after arguing for some time and submitting that no recovery is yet made, admits that the order is not properly worded. Full stop. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks, directing the respondent to show cause that how a sub-divisional officer can issue notice to an executive engineer and an assistant engineer, and whether any inquiry was conducted before recording a guilt of the petitioner and another in regard to the alignment. Full stop. He will also, respondent number 1 will also file his personal affidavit to point out that under which provision of law an accused can be asked to collect the evidence and produce it before the department, so to initiate recovery proceedings against the person who are accused of so-called dereliction of duty. Full stop. Let affidavit of the Principal Secretary of the department be filed in this regard within the aforesaid period. Till then, operation of the impugned order dated 9/3/2023 being cryptic and against the principles of natural justice shall remain state. Serial number 60. हमको हमारा जो मेडिकल ना मान के महिला हमको जो है नो वर्कर नो पे का ऑर्डर कर दिया, हमने अपील भी डिसाइड है नो वर्कर नो पे मानते हुए महिला, फिर हमने उसकी अपील करी, अपील भी हमारी डिसमिस हो गई. It is issue notice to the respondent. Punishment of censure has been सेंश्योर दिया है. yes. नहीं, इनके तो दूसरी बहस कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि मेडिकल की लीव न मानते हुए ये अनऑथराइज्ड एब्सेंट थे, इस कारण से ये सेंश्योर की पनिशमेंट दिया. उसकी अपील भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. यस. क्या देखा? Respondents, in as much as petitioner's contention is that unauthorizedly his medical prescriptions and certificates have been rejected by the authorities and they have passed a punishment order inflicting punishment of censure on the petitioner. Full stop. Appeal filed in this behalf too has been rejected. Next, issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Number 17. Manoj, this is a third round of litigation. The previous order passed in the writ petition is at page number 75. If this is being seen, Manoj will find that 3 orders were assailed in that writ petition. All those 3 orders were quashed. Prior to this, Manoj, at page number 70, 71 and 72, the first order was quashed by this honorable court, and the liberty was granted to the office of the Chief Executive Officer, Jilla Panchayat, to deal with the case and pass a specific order with respect to the inquiry, which was conducted subsequently, Manoj, by the order of the collector. Page number 74 is the operative order of the impugned order, which was assailed subsequently in the last writ petition at page number 75. If Manoj will see, Manoj, from page number 77, there is a specific observation and the direction by this court that the impugned dated 2/5/2019, 29/8/2019 and 14/3/2022 contained in extra P1, P2, P3 respectively are hereby quashed.
And now, my lord, the respondents are at liberty to proceed in accordance with law after taking recourse to section 89. ऑफिसर का ऑर्डर तो अपीलेबल ऑर्डर है ये P1 मालूम, मैं इसलिए उस पे आ रहा था कि ये वाला ऑर्डर इसलिए दिखाया आपको कि जब ये तीनों ऑर्डर क्वॉश कर दिया हाई कोर्ट ने, इसके अगेंस्ट में कोई भी दीज ऑर्डर्स वर नॉट असेल्ड, तो P1 के ऑर्डर से उन्होंने वापसी से क्या किया कि जितनी चीजें हाई कोर्ट में और पुरानी प्रोसीडिंग्स हुई थी उन सबको कॉपी और पेस्ट किया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड्स अप, उन्होंने फिर से वही सेम ऑर्डर कर दिया, पुराने वाले ऑर्डर को कंसीडर करते हैं। कंटेम्प्ट लगाइए, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है ना ये तो। क्योंकि वो क्या है कि प्रीमेडिटेटेड माइंड था वो मेरे खिलाफ में कंटेम्प्ट में उनका माइंड ठीक हो जाएगा भाई, आपके आएगा तो ही हो पाएगा। नहीं, ये सब High Court is High Court and all are equal. And this is what my submission. My pain is this only, sir. That there are two different things. If there is non-compliance of the orders of the Honorable High Court, then your remedy is to file a contempt petition. If you are challenging this order, then this order is appealable. Sir, either you file appeal challenging this order before the appellate authority, or you file contempt proceedings as you may deem. Sir, my respectful submission that the authority has acted beyond his powers, and the orders and the orders which had already been quashed is again being reiterated in the order, my lord, and therefore I have filed this writ petition. appellate authority को बताइए, आपको बताया ना दो ही विकल्प है आपके पास, अपीलेट अथॉरिटी को बताना कि ये इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, या हाई कोर्ट को बताना कि आपके आदेश की अवहेलना की जा रही है, या कंटेम्प्ट में इनको पनिश करिए। दो ही रेमेडीज हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए। सर, आई एम परमिटेड टू सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय इंस्ट्रक्शंस नहीं, आज अभी हो जाएगा। इसमें अभी आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप लिखा देते हैं कंटेम्प्ट फाइल करना है या अपील में जाना है, उतना बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? वो रिकवरी का बता रहे हैं कि रिकवरी का लेटर इशू कर दिया, तो अपील में जाके स्टे कराइए ना। जी चाहिए। श्री निखिल तिवारी prays for withdrawal of this writ petition as impugned order is appealable and he will advise the petitioner to file an appropriate appeal before the competent authority along with an application for stay for stop. सर, इसमें विड्रॉल का मैं that in case appeal is filed within 15 days, an appellate authority shall consider an application for stay in accordance with law within further period of 15 days. Sir, Serial number 18 Shri Vinay Pratap Singh. 2016 का shall decide it on its own merits. सर्कुलर मला स्थायी कर्मी का 7 अक्टूबर 2016 का है मला, इसके बाद मतलब एक संशोधित सर्कुलर इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने दिया मला, ये कहते हुए कि ये सर्कुलर जो है सेक्शन राइटर पर लागू नहीं होंगे। तो हमने C5 पे मला लगाया है जो कि 3/5/2018 को हुआ मला। इस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने जो है सर्कुलर को हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया मला। उसके बाद मतलब उसकी अपील हुई मतलब, अपील भी खारिज हो गई मतलब स्टेट की। उसके बाद रिव्यू हुई वो भी खारिज हुई, उसके बाद SLP हुई वो भी खारिज हो गई मतलब। उसके आधार पर हमने आवेदन दिया है कि उस सर्कुलर से हमको भी कंसीडर कर लिया जाए जो कि हमने लगाया मतलब P15 मतलब। Gopal Singh Baghel, Learned Counsel for the petitioner, submits that petitioner claim for grant of benefits under the GAD circular dated 7/10/2016 were rejected in the first round on the reject नहीं है, were not considered in the first round on the ground that said circular is not applicable to section writers. Stop. Later on, said circular dated कौन सा सर्कुलर है वो? P5 3/5/2018 में। Circular dated 3/5/2018 keeping the section writers out of purview of GAD circular dated 7/10/2016 has been quashed by the coordinate bench wide order dated 21/11/2019 passed in WP 12162/2018 and that order was upheld by Honorable Division Bench in WA 238/22 whereafter review petition RP 441 of 2022 was dismissed and then SLP 2 was dismissed by order dated 28/11/22, therefore prayer is to direct the respondents to consider case of the petitioner
and his representation as contained in Annexure P15 in terms of GAD circular dated 7/10/2016. This innocuous prayer is not opposed by Shri Vijay Kumar Shukla. 15 दिन 60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. Serial number 19, Kislesh Pandit. It's the second round of litigation. Earlier, we had approached this honorable court. He is a panchayat secretary, my lord. There was some recovery initiated against him. Now they imposed some charges against me, and before the inquiry could conclude, my lord, they issued an order of recovery. We came before your lordships, my lord. Lordship passed an order, my lord. That lordship's order is Annexure P6 on page 26 onward, ma'am. 27 would be relevant, my lord. It was withdrawn with a liberty to move a appeal before the authorities. And the last 4 lines, what my lords had written, my lord, it is made clear that if the stay application is moved by the petitioner, then the same shall be considered and decided by the appellate authority in accordance with law. Now, if lordship sees P8, my lord, we prefer an appeal. They admitted that appeal, my lord, and for stay, what they say. 5वां पॉइंट पे लिखा है स्थगन आवेदन पर विचार किया गया, विचार उपरांत स्थगन आवेदन निरस्त किया जाता है। ये सब पेज 36 पे सर, 36 दैट इज एनेक्चर P8 मान धारा 2 से पढ़ देता हूँ। अपील की गृहता एवं स्थगन पर अभिभाषक श्री मिश्रा के तर्क सुने गए तथा प्रस्तुत अपील पर अवलोकन किया गया। अपील के नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, ये कमिश्नर लोग क्या कर रहे हैं भाई आपके? देखिएगा, पिटिशनर हैज असेल्ड ऑर्डर डेटेड 27 फरवरी 2023 passed by Commissioner Rewa Division Rewa rejecting an application for stay without passing a speaking order. Full stop. I perused the order. Full stop. Order is admittedly non-speaking. Commissioner has not given any reasons for rejecting the stay application. Such non-speaking order cannot be sustained in the eyes of law. It is quashed. It is hereby quashed. Matter is listed before the Commissioner on 10/4/2023. Commissioner Rewa is directed to consider the application for stay on its own merits on 10/4/2023 and pass a speaking order. Till then, recovery is disposed of. Till then, recovery. आज 3 तारीख हो गई, 7 दिन में क्या रिकवरी? Serial number 20, Vipul Rao. काली 500 मान 500 Serial number 21, Sri Aman Rawat. The instant case pertains to the grant of benefits of third-time pay scheme. The facts are that the petitioner, he was appointed as an assistant engineer in the year 1982. Then he was regularized in the year 1987. Now, a circular came in the year 2014, which says that whoever has completed 30 years of services shall be granted the benefits of third-time pay scale. Though, I have been granted the benefits of third-time pay scale, but that period of 30 years has been counted from the date of regularization and not from the date of appointment. उसके लिए कुछ है क्या जजमेंट? There's a judgment and there's a circular which clarifies. 82 का अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाइए. Page 1, Annexure P1 at page 21. Yes. And circular is also there, at page 117. It clarifies that the period of ad hoc services shall be counted for the grant of benefits. And this has been considered, at page 125. There's an order. Paragraph number? Page 128, paragraph number 7. May I read? In the present case, the petitioner has been extended the benefit of first and second upgradation by counting the period of service from the date of recognition. The petitioner was appointed as assistant engineer by the order dated 12 February 1982, issued by the Irrigation Department.
Full stop. Petitioner's ad hoc appointment was regularized in the year 1987. He has been given benefit of third upgradation of pay, treating 30 years of service from his regularization, whereas he is entitled to complete 30 years of service with effect from 1982. It is submitted that similar issue has been decided. A similar issue is decided by a coordinate bench in WP 16112/2016 filed order dated 19 April 2022 and has directed the authorities to grant benefit of third financial upgradation on completion of 30 years of service by counting the service from the date of ad hoc appointment. Full stop. In the same terms, this petition is disposed of. It is directed that petitioner will be entitled to benefit of third upgradation subject to the date of its applicability as per the Finance Department circular, Finance Department / GAD circular, computing 30 years of service from the date of initial appointment in the year 1982. Deeply obliged. Serial number 22, Krishna Kumar Pandey. आपका जो टर्मिनेशन है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद में है कि सिर्फ कन्विक्शन के आधार पर है? वेयर इज द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन? वो एक्चुअली में उसको मैंने है पर वो मतलब अंडर आरटीआई मतलब नहीं वो लेके पेश करी श्री कृष्ण कुमार पांडे, बिकॉज दैट इज द मेन इशू. Shri Krishna Kumar Pandey prays for and is granted time to produce copy of order of termination to point out whether it was issued after conducting a regular departmental inquiry or is based simpliciter on the basis of conviction recorded against the petitioner, in which now petitioner claims he has been acquitted. Let order be brought on record within कितने समय में लाएंगे? 2 weeks. List this case only when said order is brought on record. Serial number 23, Rupesh Tiwari. This is to be linked with yet another petition, my lord. On 30th January, both the private respondent and I got transferred, my lord. Both of them joined, and thereafter we had forwarded a transfer हो गया. छोटी छोटी सी जगह. नहीं, अरे आपका पूछ रहे हैं आपने. हाँ, आपके पास आप तो यही है ना? हमेशा से यही है. ठीक, आपके साथ देखिएगा, कॉपी दे दीजिए इनको एक. सर शशांक शेखर, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री भूपेश तिवारी, श्री विष्णु देव सिंह चौहान for the caveat. Let copy of the petition be supplied to Shri VDS Chauhan during the course of the day. List this case along with WP number 6627/23. 6627/2022. 23. This next week. Stand up. Serial number 24, Ansuman Singh. Under the challenge is to the transfer order on the grounds of frequent transfers. Under the first transfer order is P2 on page 15. This is 6/8/2021. Just a minute. P2 page 15. अभी ट्रांसफर ऑर्डर कौन सा है? P7 on page 22. अच्छा. P2 का नाम कहाँ है? My lord, serial number 7. P2 dated 6/8/2020. 2021. I was transferred from the serial number 7. सीधी से रीवा तक. My lord, sir, रीवा से सीधी. रीवा to सीधी. P3, my lord, this is my relieving order. Page 18 of that order. No. Page 19, my lords, P4. They modified the executed transfer order, and I was sent from Seedhi to Umaria, which is my present place of stay.
On page 19, my lords, I have posted to Umadia from Seedhi. This is 2/12/21. Now, my lord, the impugned order is P7 on page 22. My name is on serial number 70. Page number? Page number 22, my lords. My name is on serial number 17, page number 23, first. From Umadia, my lords, I have been sent to Sagar. My lord, the challenge is on the ground of frequent transfer on the basis of clause 17 of the policy. मुझे बताइए इसमें जल्दी जल्दी बदलने का क्या औचित्य है? ले ले। हाँ ले लीजिए बस श्री Anuj Srivastava. Anuj Srivastava, learned counsel for the petitioner. Petitioner is assailing impugned transfer order dated 7/3/2023, in which name of the petitioner appears at serial number 17, whereby he is transferred from the post of ये फील्ड से डिपार्टमेंट में जा रहा है, इसकी दिक्कत है आपको। आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया था जब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर को? He should have challenged. ग्राउंड नहीं बचा ना। He should have challenged. But that was already एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ आना चाहिए था। सीधी से उमरिया आते वक्त इंस्ट्रक्शंस लेने दीजिए, कुछ है नहीं इसमें, स्टे नहीं दूंगा। Till then, because I have been able to get the gist of the matter. Whereby petitioner is transferred from the post of sub-divisional officer, public works subdivision number 1, Umaria, to the post of assistant engineer in the office of chief engineer, public works department, Sagar Zone, Sagar. Full stop. Next paragraph. Petitioner's contention is that while the order dated 6/8/2021, in which name of the petitioner appears at serial number 7, he was transferred from the post of sub-divisional officer, public works department, subdivision Mangawa, Riva, to sub-divisional officer, public works department, subdivision CG. Full stop. Petitioner was relieved to join at CD on 9/8/2021 and had submitted his joining at CD when an executed transfer was interfered and he was transferred from CD to subdivision Umaria. Full stop. Now, after lapse of just a year and 3 months, petitioner is again transferred from Umaria to Sagar. Next paragraph. Shri Jitendra Srivastava submits that when executed transfer of the petitioner was changed from CD to Umaria, he could have approached the court. He never approached the court then because it was a field posting to field posting. Now, from field to department order is appealed. Therefore, this plea of frequent transfers is not available to the petitioner in as much as in the administrative exigency transfer has been issued. Full stop. बचता नहीं, स्टे नहीं देंगे तो कुछ बचेगा नहीं इस केस में. Full stop. Though Shri Anuj Srivastava submits that there is violation of the transfer policy, but it is evident from the record that transfer is issued in view of the administrative exigency. Petitioner had already spent sufficient time in was in field. Now he is since being attached to the office duties as assistant engineer. He is assailing the order. Full stop. This plea of frequent transfer is not available to him in as much as he never challenged the order of transfer from Seedhi to Umaria, which was cancellation of an executed transfer and posting of the petitioner within 3 months of passing of the earlier order. Therefore, in absence of plea of qualified or of lack of authority, this petition does not call for any indulgence. Petition fails and is dismissed. Number 25. Something like pass over. Pass over.
serial number 26. This petition, 26, Agrawal. this petition has been preferred against the rejection of petitioner's claim for compassionate appointment, my lords. इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया My lords, it is rejected on the ground, my lords, that as per the amended rules of 2018, my lords, I'm not eligible. My lords, the father expired on 16/11/2019. 16/11/2019. I gave an application on the date is not mentioned. There is a specific pleading. There is an acknowledgement by the respondents dated 29/9/2021. 29/9/21. And the rejection is 7/3/2023. Now my case, they are saying that as per the amended rules, this amendment have come into force on 1/12/2022. Now, as per the amended earlier, my lords, at the time of my application, the only qualification was 12th class with more than 50% on the post of Prayogshala Shikshak. After that, my lords, during the pendency of my application, they changed the rules. Rules have enhanced the qualification. Your application? Application is, my lords, Annexure P3. Page 20. Page 20, yes. I specifically asked for, my lords, may see, Prayogshala Shikshak on the basis that my 12th class settled law है that it is to be considered on the date of submission of हाँ वो जजमेंट दीजिए देखिए इसको अभी करते हैं आप उसके हिसाब से कंसीडर करके डिसाइड करिए petitioners grievances that petitioner law इसी में है वो वाला डेट ऑफ पॉलिसी वाला अरे भाई आपको मैंने नाम लिख के दिया हाँ तो ये दिखाइए जी ये वाला चाहिए क्या लिखा petitioner's grievances that petitioner lost his father on 16/11/2019. He had moved an application for grant of compassionate appointment on 29/9/2021 as contained in Annexure P3. Full stop. Respondents were required to consider his application for grant of compassionate appointment in terms of the policy which was obtaining on the date of making of the application, but same has been considered on the touchstone of subsequent policy. कहाँ है वो policy? In fact, there are the rules. Amended rules are Annexure P7. P7. Amended rules as contained in Annexure P7, namely Madhya Pradesh School Education Service within bracket teaching cadre bracket closed comma service conditions and recruitment rules 2018 whereby wide notification dated 1st December 2022 कौन सा रूल है इसमें मतलब my lords में come to page number 27 schedule 3 entry 4 and have prescribed changed conditions for appointment as Prathmik Shikshak Vigyan / Prayogshala Sahayak. Full stop. Petitioner's contention is that since at the time of making application, prescribed qualification was only higher secondary with at least 50% marks in science faculty, subsequent amendment will not disentitle the petitioner from considering his case. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the petitioner and perusing the law laid down by Honorable Supreme Court in the state of Madhya Pradesh and others versus Ashish Avasthi, civil appeal number 6903 of 21, wherein Honorable Supreme Court has held that the case of a candidate for grant of compassionate appointment is to be considered on as per the policy which was prevalent on the date of making of the application, I am of the opinion that impugned order cannot be sustained and is hereby quashed. इसमें डेट नहीं आई थी ऑर्डर की डेट डाल लीजिएगा नवंबर 18 2021. Full stop. This matter is relegated to the district education officer. Yes, my lords. Number 2. Point number 2 to consider the case of the petitioner for appointment as per the policy which was in vogue
on the date of filing of the application for grant of compassionate appointment and decide the case in accordingly within further period of 60 days of receipt of certified copy of the order. Highly utilized. 27 is also same issue. Dates are different. I'll just point out the dates. आपने एप्लीकेशन कब लगाई थी? मतलब the application acknowledgement is dated 12/9/2022. 12/9 My lords. तो सेम कैसे हो जाएगा? नहीं, same- Amendment कब आया है? 1/12/2022. अच्छा ठीक है, इसमें डेट बदल लीजिएगा. 1/12/22 नहीं 1/12/22 का amendment. 12/9/2022. P3 12/9/2022. And page P3 page 15. 15 सब तो पूरा 12/9/22. My lords में सी लग रहा है ये सब at the bottom. 9/22 करके कर दीजिएगा, जाने दीजिए. Highly utilized. साइड कर दीजिए. It will be, दोनों केस में लिख लीजिएगा, it will be open to the respondents to check their inward register to verify the dates of receipt of the applications. Highly utilized. सेम इशू जो है टेम्पो क्या है? इसमें मतलब ये है कि इंक्वायरी चल रही है खिलाफ जो इसमें ये है, मतलब कमिश्नर ने जो है ऑर्डर पास करने के लिए कहा है, जबकि जिला पंचायत यूपी 6 में ऑलरेडी इंक्वायरी पेंडिंग है. मतलब तो कोर्ट ऑर्डर किया है कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक सेम ऑर्डर कर दीजिए. Dispose of. Number 29, Rahul Divakar. So I am appearing on behalf of. कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका? My lord, we have been transferred from Satna to Umaria, my lord. Page number. Transfer order is annexure P2. Lordship will find it on page number, my lord. Number 27. 27. Our name appears at serial number 47. पंचायत सेक्रेटरी नहीं सर, ये है प्रभारी तहसीलदार. तहसीलदार है सर, इंचार्ज तहसीलदार. तहसीलदार. Sir, now what we say, my lord, on the ground which we have challenged it is mainly that there was an order passed by the Honorable High Court whereby directions. Serial number क्या है इनका? 47 है sir. 47. So frequent भी है transfer within 3 years. I have been transferred twice. This is my Executive officers के लिए क्या orders हैं? नहीं sir, हम we are on the other ground, my lord. इसमें ये है that there has been promoted. The Honorable High Court has directed that Nayab Tehsildars be promoted to the post of Tehsildar. Now to circumvent these orders, my lord, now they are making us in charge Tehsildar there. This is what they said. If orders are seen, the order of the High Court. High Court's order lordship find on page number 23 onwards, my lord. ये तो दूसरा इशू है. ये लोग प्रमोशन कर ही नहीं रहे जनरल कैटेगरी. उस पे ऑर्डर हो गया. वो ऑर्डर हो गया. तो उसमें कंटेम्प्ट लगाई है कि इन्होंने प्रमोशन नहीं किया. नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर अब वो हमको ट्रांसफर करके इंचार्ज कहीं पर भेज रहे हैं. ठीक है, तो जाने जाइए ना. नहीं, हमारा एक और सर कंटेंशंस देख रहे हैं सर. इनने जो वी आर वर्किंग देयर एज तहसीलदार ओनली सर, इंचार्ज तहसीलदार. नाउ दे से दैट बाय दिस ट्रांसफर ऑर्डर आप वहां जाके काम करिए एज इंचार्ज तहसीलदार. नाउ इनका ऑर्डर की वर्डिंग देखिए सर, देयर आर नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सजेंसीज टू पुट मी देयर. इनके अगर शुरुआत से देखें और ये P2 क्रमांक स्वयं राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश जूनियर प्रशासनिक भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 2021 के तहत गठित विभागीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 25/11/2022 के अनुशंसा के अनुक्रम में कॉलम 2 में अंकित नायब तहसीलदारों को कंडिका 2 में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन कॉलम 4 में अंकित जिला में स्थानांतरण करते हुए कॉलम 4 में वर्णित पद का प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता. Nothing, nowhere they say that this is the administrative exigencies for which they are posting us there. And now they have issued a list of more than 170. 170. बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटीरियर. पेन नंबर 31 काइंडली सुन. पेन नंबर 31. आपको उच्च पद का दिया है, आपको तहसीलदार की शक्ति नहीं, हम तो वही हम तो पहले ही तहसीलदार की शक्ति डिस्चार्ज कर रहे हैं. कहाँ लिखा है? हमारा जो वर्तमान ऑर्डर है, वी आर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ. हाँ बताइए, वर्तमान ऑर्डर बताइए. Sir, we are posted here from P4, P3 देख लें. P3 देखिए. You should find it on page number, man. 33. हाँ. Yes. ये आपको 25 नंबर पे है. जी. और सर इसका जो स्पेसिफिक वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटीजेंसीज पे ही ट्रांसफर हो सकता है. नहीं, वो तो ठीक है.
इंग्रेड है। आप ये बताइए कि आप ऑलरेडी तहसीलदार के पद पे काम कर रहे वी आर हैं? डिस्चार्जिंग ड्यूटीज एज कहाँ लिखा है इसमें? सर वो जो ऑर्डर है ट्रांसफर ऑर्डर, उसमें भी वर्तमान इसमें हमारा पद का अपना सेम लिखा है। नहीं यार भाई, P3 से आप ट्रांसफर हुए थे। P2 में सर वर्तमान पद आपका ट्रांसफर कैंसिल हुआ है। P3 में आपका ट्रांसफर जो कटनी किया गया था, सतना से किया गया, स्थानांतरण संशोधित कल जिला सतना कर दिया गया आपको। इसको 2:15 बजे रखना है सर। मैं 2:15 बजे क्या बताएंगे कि वो वर्तमान में वो कर रहे हैं उसका वो तो ये तो ऑर्डर से ही बताएंगे ना, ऑर्डर में तो है नहीं ये। मैं देख लेता हूँ उसे, उसका जो प्रॉपर ऑर्डर है वो मैं देख। वैसे तो प्लीट किया है पर ऑर्डर देख। हाँ ऑर्डर सीरियल नंबर 30 इंद्रेश कुमार शुक्ला, कुमार। With respect, my lord, this is a transfer petition, my lord. By way of annexure P1, my lord, the petitioner who is working as assistant superintendent of land records, my lord, has been transferred from Sagar to Newari. Newari. Yes, my lord. My lord, I am before your lordship on a very limited two grounds, my lord. The first. क्या नाम है आपका? सीरियल नंबर? Yes. Serial number 43. 44 पेज नंबर 13 44. Yes. सागर से निवाड़ी। Yes, my lord. Now, before that, my lord, I could invite my lord's kind intention that, my lord, in the year on order dated 31/8/2021, my lord, that the order I have filed along with my additional document, if my lord will permit me to supply, my lord. But that order, my lord, initially I was transferred from Umaria to Riva, my lord, by the next year P5, my lord. And just after, my lord, 5 months, my lord, I've been again transferred from 6/11/2022 from Riva to Sagar, my lord. Now, my lord, Did you challenge that order? that order, in all fairness, my lord, that I filed a representation, my lord. They, my lord, did not cancel my order of transfer. However, my lord, I would not release. You were happy to be at Umaria? No, I hate Riva. नहीं रीवा से तो फिर आप इधर आ गए। आ गए हम, सागर आ गए थे ना? ये इफेक्चुएट भी हो गया। सागर आ गए थे, आप पास आ गए मेनलैंड के, तो आपने कहा कि खुशी की बात है। उसके बाद में फिर उस ऑर्डर को नहीं तो अगर, अरे भाई अगर आप दुखी थे सागर आने में, आपको चैलेंज करना चाहिए था। नहीं, वो 4 महीने में मुझे क्यों हटा दिया गया? वही आगे का सबमिशन ये है कि उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, इन्होंने हमको रिलीव नहीं किया, एंड आई हैव केप्ट ऑन वर्किंग एट रीवा। फिर रीवा से सागर कब आए? रीवा से सागर का इन्होंने अभी इस ऑर्डर के बाद फिर इन्होंने हमको रिलीविंग अभी 28 तारीख को पास। 28 को आप सागर आए हैं? 28 को सागर की रिलीविंग दी हमको। कहाँ है वो रिलीव? लगाया सर P6। P6 ये मेरे एडिशनल डॉक्यूमेंट। हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पेज नंबर 6 पर मैं एडिशनल 6/11/22 पूरा नहीं लगाया आपने? 6/11/22 6/11/22 से आपको किया गया था ना रीवा से सागर? रीवा से सागर उसका इस पे लगाया पिटीशन। किस पेज पर है? 6/11/22 P2 पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में आपका नाम किस सीरियल पर है? मेरा नाम है सेकंड लास्ट 14 नंबर, 14 नंबर पे। 14। बताइएगा, ये तो बड़ा अट्ठाईस 3 को तो आप इनको सागर के लिए रिलीव कर रहे हैं, और उसके पहले जो है आप इनका सागर से ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, मैं निवेदन मेरा ये था सर कि ये अभी सहायक अधीक्षक हैं, इनको हमने अधीक्षक बना दिया। पेज नंबर 11 देखें सर। पेज नंबर 11 मैं आई रीड दैट। राज्य शासन एतद द्वारा जो अर्लियर पिटीशन अभी श्रेष्ठ पंडित साहब ने बहस की, दिस इज द प्रमोशन इज आल्सो। राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश भू अभिलेख बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिका एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2012 के तहत गठित विभागीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 30/12/22 की गई अनुशंसा के अनुक्रम में कॉलम 2 में अंकित सहायक अधीक्षक। प्रभारी क्या बना रहे हैं आप मुझे बताइए? प्रभारी का प्रमोशन होता है क्या? इस पॉइंट को चलिए, अब आपने उठाया है तो बताइएगा। बहुत सारे नहीं, एक सेकंड जी साहब। प्रभारी का प्रमोशन चैनल कौन सा बताइएगा थोड़ा कानून में? ये सब अभी 3-4 अरे भाई
थोड़ा सा कानून तो समझाइए हमको। ये भी लगभग 450 लोगों का किया है अरे सर। 450 नहीं 4,500 का करिए, सरकार आपकी है, आप जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभारी का प्रमोशन कौन सा होता है बताइएगा थोड़ा सा। इसमें जो पावर्स दिए गए हैं सर वो मेन अधीक्षक के दिए गए। हमें उसके मतलब नहीं है, प्रभारी का ट्रांसफर क्यों कहाँ प्रमोशन क्या होता है बताइएगा थोड़ा। ये 30/12/22 को जो ये वेयर इज द प्रोविजन अंडर लॉ टू प्रमोट ए पर्सन ऑन द पोस्ट ऑफ इंचार्ज? I'm praying. You are trying to play fraud with the system. No, I'm praying time for call. Yes, you clarify it. Yes, ma'am. Under the affidavit of the principal secretary of the revenue department and the GAD department both. देखिएगा, petitioner is aggrieved of order dated 25/3/2023 in which petitioner's name appears at serial number 44, transferring him from Sagar to Niwadi as in charge superintendent land records. Next paragraph. Petitioner's contention is that by the order dated 6/11/2022 in which petitioner's name appears at serial number 14, he was transferred from Rewa to Sagar. Full stop. In fact, by order annexure, order dated 28/3/2023, Collector Rewa had relieved the petitioner to join at Sagar. Therefore, on 25/3/2023, petitioner had yet not joined at Sagar. Full stop. Therefore, the transfer order is cryptic and arbitrary as far as it concerns the petitioner. Next para. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, in his turn submits that petitioner has been promoted and given charge of superintendent of land records. Full stop. When Shri Manas Mani Verma is asked to show from the recruitment rules that there is any provision of promotion as in charge to the in charge superintendent in the recruitment rules, then he prays for time to seek instructions. Full stop. Let specific affidavit be filed by the principal secretary of the revenue department and also the general administration department that once meeting of the screening committee was convened in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Bhu Abhilekh, English में लिखिए मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स एंड क्या बंदोबस्त इज कंसोलिडेशन जी सर, सेटलमेंट एंड सेटलमेंट। आप सब सेटलमेंट ही कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। नहीं सर, वो 30/12/22 का देखना पड़ेगा सर। समझ रहे आ रहा है यहाँ पर 30/12/22 सेटलमेंट ही हो रहे हैं। ये और क्या हो रहा है? मेरे निवेदन क्या लिखिएगा? 30/12/22 की अनुशंसा मंगानी पड़ेगी सर। In terms of इतना settlement class 3, non-gazetted bracket में executive and technical bracket close service recruitment rules 2012, then how can promotion be denied to the petitioners, regular promotion be denied to the petitioners and they be given charge, calling it to be promotion giving higher responsibility. Full stop. Let this position be clarified. In the meanwhile, operation of the transfer order of the petitioner from Sagar to Niwadi shall remain stayed. Let reply be filed within 4 weeks. Final 3-1. जी। If this could be observed that the present case of posting Magar petitioner would be validated. कहाँ रीवा में? नहीं ये सब नहीं। आप रीवा से 28 तारीख को रिलीव हो चुके, सागर ज्वाइन करिए। ये इतनी इंटेलिजेंस नहीं दिखाते होते सर। या रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का कह देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इस एस्पेक्ट पे नहीं, सभी एस्पेक्ट पे फिर हम पिटीशन रखेंगे नहीं, एफिडेविट जवाब कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक।
जीएडी के सर ये प्रोविजन ले आइए कहाँ ये रेवेन्यू का जीएडी के बाद जीएडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आवश्यकता नहीं रहेगी सर। इसलिए रहेगी क्योंकि नियम तो प्रिंसिपल जेडी बनाता है ना। नहीं, इसमें मेरी प्रार्थना ये थी। अच्छा चलिए जेडी को हटा दीजिएगा, इन्हीं की प्रार्थना ये बचा। क्योंकि भू अभिलेख से रिलेटेड ही वो बैठक है सर। ठीक है, चलिए चलिए। Event number 31 is submitted in This is second round delegation. By which the P1, the first time was the transfer order is P1 case number 11. The petitioner has been transferred also, and that order has been challenged before this honorable court by annexer P6 also case number 30. आप तो रिलीव हो गए, 1 अप्रैल को रिलीव होना था, आप बहुत लेट आ रहे हैं वकील साहब। रिलीविंग हमने स्टेज, अरे इसी में लिखा हुआ है 1 अप्रैल को ज्वाइन करना है। That is lordship, that order has been challenged lordship by annexer P6 lordship case number 13 also. This honorable court is granted stay in the favor of the petitioner. 11/2022 is annexer P6 case number 30. फिर उसके बाद thereafter lordship by annexer P7 lordship. एक सेकंड रुक जाइए, 21/10 की तो ऑर्डर पे स्टे है। हाँ वही, ये इसको ये सेकंड राउंड लिटिगेशन। हाँ फिर क्या हुआ? And thereafter lordship by annexer P7 lordship, page number 31 lordship, this honorable court dispose of the petition with the direction. हाँ ठीक है, representation decide कर देंगे। My lord. हाँ where your representation? कि ये इनके जो भी ग्रीवियंस है उसको। फिर क्या हुआ? representation P11 lordship. P11 चलिए, क्या लिखा उसमें? P11 पे इन्होंने हमारा वो रिप्रेजेंटेशन एक उसमें without any speaking, without consideration of my facts. एक सेकंड देख लेते हैं। That copy is next page. हाँ आपका अभ्यावेदन बताइए। अभ्यावेदन is lordship, that is P8 lordship. P8 क्या लिखा उसमें पढ़िएगा। P8 क्या ग्राउंड है आपके? जी विनम्र प्रार्थना है कि पैरा टू लॉर्डशिप से अपना कोई आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेषित नहीं किया है। अभी मुझे आशंका है कि मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद किसी शरारती तत्व द्वारा पूर्वक मेरा आवेदन ऑनलाइन किया गया। मेरा अनुरोध है कि मेरे स्थानांतरण संबंधी आवेदन का हस्ताक्षर तथा किसी आईपी एड्रेस से ऑनलाइन किया गया है। ये बताइए इसकी क्या क्या लिखा है आपने P11 में इसके बारे में? When he has made a specific allegation and he has sought necessary information. Other same issue lordship, other petition is still pending before this. मे भी पेंडिंग रुक जाइए आप। कहाँ डिसाइड किया आपने ये एस्पेक्ट? देखिएगा, petitioner is aggrieved of order dated 10/3/2023 passed by the Commissioner Public Instructions in terms of the orders passed by a coordinate bench in WP 24828/22 decided on 13/12/2022। प्याज का क्रमांक लिख रहे हैं, पढ़े तो ऊपर आपके कमिश्नर साहब। गलत हो गया सर। ये क्या मंडी बोर्ड का भी चार्ज है क्या इनके पास में? प्याज कहाँ से याद आ गई? कट पेस्ट हो गया साहब, गलत। शिक्षा में प्याज का क्या रोल है? वो कट पेस्ट हुआ है सर कहीं कंप्यूटर से, थोड़ा सा कंप्यूटर से, क्योंकि ये आत्रोहित भी लिखा है, पढ़िएगा यहाँ पर। इसमें मैं रिप्लाई मंगा लेते हैं सर। हाँ, तो हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको, आपको दोबारा डिसाइड करिए इनकी सारी आपत्तियों को डिसाइड करते हुए। ये ऑन कॉस्ट वाला अगर आया होगा तो वो नहीं डिस्कस किया है, मैं देख तो नहीं किया है तो उसको डिस्कस करें और डिसाइड करें। फिर क्या लिखा? इतना without discussing any of the issues raised by the petitioner in his representation dated 27/10/2022 oblique 20/12/2022 annexure P8 full stop. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner submits that
he had taken a specific ground that he had never moved any online or offline application for transfer and had sought copy of the IP address from which online application was made, but without discussing all these facts, impugned order has been passed, which is nothing but a cut-paste copy of the order, as is apparent from the language and mistakes apparent on face of the record, and therefore said order having been passed without considering the issues raised by the petitioner deserves to be quashed and be quashed. Next paragraph. Manas Mani Verma submits that this issue of application by the petitioner for transfer is not admittedly considered by the Commissioner Public Instructions. Accordingly, impugned order dated 10/3/2023 is hereby quashed. Matter is remitted to the Commissioner Public Instructions to decide the matter afresh after taking into consideration all the grounds which have been raised by the petitioner in his representation dated 20/12/2022 within 30 days of receipt of certified copy of the order, which petitioner shall be obliged to submit along with copy of this writ petition and its annexures within 3 days from today before the Commissioner Public Instructions. Till then, operation of the transfer order dated 21/10/2022 shall remain stayed. Serial number 32. फाइनल हियरिंग में लगा देते हैं. The matter is the issue involved in this is pending before the Supreme Court. Your lordships have noted it in the previous order. श्री आपका शुभ नाम बताइए. श्री दीपेश महावत submits that time be granted as this case is to be argued final. Next para. Shri Ashish Shroti submits that matter is pending before the Honorable Supreme Court in case number वगैरह कुछ है आपके पास? लिख के दे दीजिएगा. Last order sheet में शायद noted है. ठीक है, देख लीजिएगा. Noted हो नहीं तो इनसे लिख के ले लीजिए. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing as per its turn and seniority in Part B of the cause list once the aforesaid SLP is decided by Honorable Supreme Court. Serial number 33. We suggest it. महावर साहब इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. आशीष जी भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल भी बाइंडिंग. पिटीशन कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ. सीनियर आ जाए उनके तो फिर कर रही. सेठ साहब बताइए. Senior is adjusted today, my lord, because of Mahavir Jayanti occasion. अच्छा, क्या है, क्या मैटर क्या है तो बताइए. Shri Sanjay Seth, Planet Council. My lord, can it be taken after 2 weeks, my lord? Why? Because of next week, senior is also adjusted, my lord. इसमें तो लिखा नहीं है, इसमें तो सिर्फ आज ही का एडजस्टमेंट है. 11 and 12. 11 और 12 को एडजस्टेड है ना. 10 को लगा देते ना. 10 को तो एडजस्टेड नहीं है ना. 10 को सुनेंगे. चलिए. श्री आपका शुभ नाम बताइए. Ajay Tiwari. Ajay Tiwari submits that the senior is on adjustment today because of Mahavir Jayanti. On request of Shri Ajay Tyagi, list this case on 10 April 2023. Oh, bless you. Serial number 34. Tiwari. काय के लिए जी अरे अच्छा है क्या. नाम तो आपका ऊपर लिखा हुआ मनोज तिवारी. सीनियर कौन है? आप हैं वो है. पहले आपने 16/3 को भी टाइम लिया था. चलिए, क्या मैटर है ये सस्पेंशन लिखिए. चलिए इसको फिर एडमिट कर लेते हैं. पिटीशन इज एडमिटेड फॉर नहीं श्री मनोज तिवारी अगेन प्रेज फॉर टाइम. On 16/3/2022, time was sought on the ground that arguing counsel is out of station.
Today it is submitted that Sri Manoj Pagwar is not available. Full stop. This practice of seeking adjournment time and again is not a healthy practice. It results in wastage of court's time. बताइए क्या मैटर है? Even. Page number 30. हाँ. Suspension. Jal section. इसकी अपील करी आपने निलंबन आदेश? Page number 16. हाँ, क्या हुआ उसमें? तो वो तो 11/1/22 को हो गई. डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज स्टिल पेंडिंग. हाँ, तो इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए बोल देते हैं एक्सपीडिशियसली. और क्या? आप अरे भाई, आप साल भर से तो केस बढ़ा रहे हैं. शिकायत आई. अरे आई होगी, ठीक है. आई कैन ओनली आस्क देम टू कंप्लीट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक्सपीडिशियसली. इफ इट इज नॉट, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, नहीं किया तो 6 महीने में कंप्लीट करें और इतना कह देते हैं बस. इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे. देखिएगा, श्री Manoj Tiwari submits that petitioner was placed under suspension by order dated 7/7/2021 by the Joint Director Public Instructions Sagar. Petitioner had filed an appeal against the order of suspension, which too has come to be rejected by order dated 11/1/2022. Full stop. Departmental inquiry is still incomplete. Full stop. Taking these facts into consideration, comma, since petitioner is placed under suspension, contemplating departmental inquiry, and there are instructions of the government contained in GAD circular to complete departmental inquiry within a period of 1 year of the date of its institution, comma, this petition can be disposed of with the following directions. 1. That respondents, if have not completed the departmental inquiry, shall complete it within period of 6 months from today. As the order is being passed in presence of the learned panel lawyer representing the state government. And if departmental inquiry is not completed within aforesaid period, then they shall review the order of suspension in terms of the GAD instructions issued in this behalf and pass speaking order within further period of 15 days. In above terms, petition is disposed of. Serial number 35. Baldev Prasad Patel. Rakesh Singh. इसमें लास्ट टाइम एमपी वेटनरी डिपार्टमेंट कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का रूल्स मांगा गया था. सर 1 वीक का टाइम चाहिए सर मेरे को. देखिएगा, there is non-compliance of the order dated 22/2/2023, when petitioner was directed to bring on record relevant rules. He prays for further time. He is granted 4 weeks time to do the needful list after 4 weeks. 2 वीक्स में आ जाएगा सर. चलिए. Serial number 36. Prakash Dwivedi. Kindly last order sheet not 28 to 23. क्या लिखा है उसमें? इंक्वायरी का लिखा था कि इंक्वायरी हैविंग ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस केस नाउ. फाइल आईए नंबर 4509 आरबी 23. फिर आपको बताना था ना ये तो. सर में इंक्वायरी है भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. हाँ, तो फिर बच्चा इंक्वायरी can be only make only humble in this case now. जी. In this case now matter pending for the screening committee now. In the light of now we file a document and adjourn. तो स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी. तब तक के लिए कि इंक्वायरी का पर्सन में कैन नॉट बी फाइल द फाइनल ऑर्डर. ऐसा कैसे हो जाएगा? इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है. सर एज पर द P5 फाइल डॉक्यूमेंट्स नोट पेज नंबर 22. एडिशनल डायरेक्टर ने भी लेटर लिखा है ना एसपी शेड्यूल को. हाँ, क्या P5 पढ़िए. अरे आपसे जो पूछा था वो तो आप बता ही नहीं पा रहे. उसमें आपने इंक्वायरी था तो इंक्वायरी लिखी कंप्लीट हो चुकी है. देयर इज एनी प्रोविजन ऑन कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. बता दीजिए ना कहाँ प्रोविजन है. अब तो सर इंक्वायरी हो चुकी है. अब तो आपने पूछा था कि इंक्वायरी रोके कि ना रोके. हाँ, तो इंक्वायरी रोकने का प्रावधान बता दीजिए.
सर इंक्वायरी होगी चूंकि हमारे अगेंस्ट हो चुकी है। हाँ, तो बस ठीक है, कुछ बचा नहीं इस केस में। वेरी शॉर्ट पेन दिस केस सर, नहीं, पर्सनल इंक्वायरी ये सब कैन नॉट पास द फाइनल ऑर्डर। रीजन दैट एज पर द P12 पेज नंबर 22 देखें सर। ब्रजेश चौबे, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, स्टेटस को कर देना ना, ये सब नहीं करेंगे, सॉरी। That departmental inquiry is already complete. He is not in a position to point out that there is any prohibition on conducting departmental inquiry or taking action pending reference before the high-level scrutiny committee, as he was directed to bring on record wide order dated 28/2/2023. Full stop. Since there is non-compliance of the order dated 28/2/2023, and according to the petitioner counsel, departmental inquiry is complete, no further indulgence can be shown in the matter. Full stop. Petition fails and is dismissed. Serial number 37. It says Pandit. इसका नाम पढ़ रहे हैं आप? Serial number 37. श्रीमती सुधा गौतम। क्या मैटर है? ट्रांसफर मैटर में रिप्लाई क्या इशू क्या है? challenging the audit क्या service we transferred from बताइए क्या इंस्ट्रक्शन है आपके? हाँ ठीक है, इनसे पूछ रहे क्या इंस्ट्रक्शन है? Kindly pass over this case, my lord. पास ओवर से क्या होगा? The file is allotted to Shri Manasmani sir. फिर कहाँ चलेगा वो? तो अभी कुछ शायद वो compliance के लिए कुछ। अरे भाई, पैनल लॉयर को जाने की अनुमति है, उसके प्राइवेट मुकदमे आते हैं, सरकारी वकीलों को कहाँ है अनुमति? पास ओवर करता है। पास ओवर रखिए। आपका शुभ नाम क्या है? सोनाली विश्वास, लर्नेड काउंसिल फॉर। सर अच्छा, आ गए। 2 दिन का जवाब आ रहा है। अच्छा, प्लीज फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई, IR टू कंटिन्यू। 69 also be the same. मैडम 69 नंबर आने पे वेट करिए। Please foreign is granted 2 weeks time to file reply. List after 2 weeks करिए। IR to continue. चलिए। Serial number 38. श्री दिलीप कुमार मिश्रा। रिकॉर्ड आई है क्या? रिस्पोंडेंट्स सर्विस हुई नहीं हुई? किस ग्राउंड पर आए आप अनाउंसमेंट के लिए? हाँ? और उसमें क्लियर नहीं है भौतिक क्षमता प्रभावित नहीं। एक सेकंड। क्या करते थे आप बताइए? उससे हाँ, बताइए इस डिसेबिलिटी से क्या फर्क पड़ा आपके मूवमेंट पर? एक सेकंड। एक मिनट रुकिए। जो बढ़ सकता है वो बढ़ा देता हूँ मैं। लॉस ऑफ इनकम में बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ
अटेंडेंट वगैरह नहीं दिलाया है आपको? कम दिया है। हाँ, कम दिलाया है। अटेंडेंट और डाइट वाइट वो सब उसमें बढ़ा देते हैं। ट्रांसपोर्ट, डाइट, अटेंडेंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। देखिएगा, श्री विनीत कुमार मिश्रा, Senate Counsel for the appellant, none for the respondent. Though as per the office note dated 13/2/2023, respondent number is 3 is served as per website www.indiapost.gov.in. Full stop. Next. The perusal of the award reveals that it has been passed against the respondent number 3. Respondent number 3 is not appearing despite service of notice. Next pair. This appeal is filed being aggrieved of award dated 30/7/2022 passed by 7th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Jabalpur in MACC number 3156/2017, whereby for an accident which took place on 6/11/2017, resulting in fracture of left tibia and fibula bone, resulting in 40% permanent disability, it is submitted that no amount has been given under the head of loss of earning capacity and meager amounts have been awarded under various other heads. Next pair. As far as डॉक्टर की क्या एविडेंस है? किस डॉक्टर को एग्जामिन कराया? AW3 AW2 हाँ। Dr. Sharad Dwivedi has mentioned in his examination in chief that there was a restriction on the movement of the knee of the appellant causing pain, and he was not in a position to sit in a squatting position, and therefore he had assessed 40% permanent disability. Full stop. Certificate कहाँ है इनका? Disability certificate exhibit 349 is issued by Dr. S. Dwivedi, but it is not a certificate issued by the district medical board. Full stop. It is true that Shri Dwivedi was member of medical board Victoria Hospital, Jabalpur, but a certificate issued by the medical board is one where the whole board sits and is authorized to issue the certificate. Next para. Shri Dwivedi has admitted that he had not treated the claimant appellant. Full stop. He also admitted that he is not in a position to give percentage of relative disability in relation to the whole body. Full stop. He admitted that there was no injury to the kneecap of the injured. Full stop. He has also admitted that there was complete union of the tibia bone above the left knee, but it was plated. Full stop. Thus, he further admitted that he is not in a position to point out as to what is the condition of the claimant on the date of his leading evidence. Thus, when all these aspects are taken into consideration, then judgment order of the
award of the tribunal not awarding any amount under the head of loss of income cannot be said to be arbitrary or illegal in as much as aspect of functional disability was not proved by the claimant through any cogent evidence. Next para. Learned Tribunal has awarded only a sum of rupees 5,000 under the head of nutritious diet and another sum of rupees 5,000 under the head of attendant. Next para. Fact of the matter is that looking to the date of the accident, that is 6/11/2017, and the fact that reunion of a tibia-fibula bone takes about 12 to 16 weeks, it will be appropriate to award a sum of rupees 16,000 under the head of nutritious diet at the rate of rupees 4,000 per month for a period of 4 months, and another sum of rupees 16,000 under the head of attendant at the rate of rupees 4,000 per month for a period of 4 months. Thus, under these heads, claimant will be entitled to a sum of rupees 32,000 cumulatively against a awarded sum of rupees 10,000. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 22,000. Next para. Tribunal has awarded only a sum of rupees 10,000 under the head of loss of income. Full stop. Fact of the matter is that on the date of the accident, wages for a skilled laborer were to the tune of 9,360 per month, and therefore claimant would have remained immobilized for a period of 4 months. Therefore, he will be entitled to a sum of rupees 37,440 under the head of loss of earning capacity, loss of income for a period of 4 months in place of rupees 10,000. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 27,440. Next para. Tribunal has only awarded a sum of rupees 1,000 under the head of transport, which is enhanced to rupees 5,000 looking to the nature of the injury. Thus, there will be addition of rupees 4,000 under the head of loss of, under the head of expenses on transport. Next para. Besides this, Tribunal has not awarded any amount under the head of physiotherapy and future treatment, full stop, for which sum of rupees 10,000 each is awarded, specifically taking evidence of Dr. Dwivedi into consideration that his fracture was treated with plating, full stop. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 73,440, to which claimants will be entitled to in addition to the amounts awarded by Learned Claims Tribunal. This additional amount will also earn 6% interest from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. Record be sent back. Serial number 39. Anuj Nayak. On the last hearing, record was called. Record is Still awaited, matlab? Record is still awaited. On the last date of the hearing, Mr. Government was pleased to have to call for the record of the law. But till now, record has been received. It is unfortunate that Commissioner under Workmen Compensation Act, कौन सा लेबर कोर्ट है ये? Hoshangabad. That is Labour Court Hoshangabad has not bothered to transmit the record. Let record be positively called for, failing which a letter be sent to the Chairman Industrial Tribunal to take action against the
presiding officer of Labor Court, Hoshangabad. IR में kindly continue. Let record be called for within 2 weeks. List on 18 अप्रैल 2023 नहीं 18 नहीं, list in the week commencing 17 अप्रैल 2023. Serial number IR में kindly. IR to continue. Grateful. Serial number 40. Shrimati Rannu Rajat. Sanjeev Mitra. My lords, on the last date, my lords have directed to produce the appointment order of the petitioner. We have sent the letter to the petitioner on, my lord, 28/3/2023 to, my lords, I'll read the 11th line. My lords, please. आप दिनांक 31/3/2023 ऑर्डर क्या है? My lords, on 28/2/2023. हाँ. Then, my lords, on 28/3. जी फिर. Then, my lord, this we have sent the letter, my lord, on 28/3/2023 that was received by the petitioner on 29/3/2023. And we have said that the आप दिनांक 31/3/2023 को समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो गई नहीं हुई. ये नहीं हुए सर. अच्छा, तो क्यों नहीं आदेश का पालन करें? इनको कॉपी दीजिए, उपस्थित कराएंगे. देखिए, श्री सौरभ सोनी submits that communication is already issued in favor of the petitioner to appear before the district education officer. कहाँ के हैं ये? सर ये है सिंगरौली with all her original documents. She submitted that despite receiving the notice, petitioner has not appeared before the district education officer Singrauli on 31/3/2023. Full stop. Now it is directed that petitioner shall appear before the DEO Singrauli on 10 April 2023 along with all the relevant documents. Let copy of the communication copy has been supplied. Be supplied to Shrimati Rannu Rajak, learned counsel for the petitioner. Full stop. It is made clear that if petitioner fails to appear before the district education officer on the set date, then adverse inference may be drawn against the petitioner. भाई नौकरी करने लगे होंगे अभी तक 10 साल में, उनको इंटरेस्ट है, इसको खत्म करें, फिर क्या को चला रही है इसको? इसके जो हमारा है वो कैटेगरी 3 में हमें सब नहीं मालूम है. Either you are appearing or this petition is going to be dismissed. उनका एडमिशन हो गया तो List in the week commencing 17 अप्रैल 2023. 17 मत करिए, 24 अप्रैल 23. Serial number 41. Raja Tiwari. जी. Private school is not eligible, but no fee have you increased holding the court of control. क्या होगा? Kindly say article 3(1). 3(1). This is the order of the appointment dated 17/12/2083. Page number 21. This is the appointment letter. In which manner the specific condition was there. संबंधित लास्ट पैरा पेज नंबर 21. संबंधित पदाभिलाषी की आवश्यक कार्रवाई उद्देश्य से पदाभिलाषी को दिनांक 7/1/84 तक की अवधि में प्रदानित शाला में पदभार ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा आदेश निरस्त माना जाएगा. But she has submitted his joining worksheet. Kindly see another P2 worksheet on 10/2/84. Page number 20. She has submitted joining 10/2/84. किसकी सर ये रेस्पोंडेंट नंबर 6 की नियुक्ति को चैलेंज कर रहे हैं. नियुक्ति को चैलेंज कर रहे हैं कब? 2014 में. जी. अरे 84 से 2014 कितने साल हो गए? अरे you may have made complaint. She joined on. We don't know whether that delay was condoned or not. क्या लोकत है आपका?
और ये पिटीशन 2014 से इस माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है। हमारे अदर सबमिशन कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करना है बताइए। आप विड्रॉ करेंगे कि कॉस्ट के साथ खारिज करना है, इतना बता दीजिए। दिस इज अ पिटीशन फुल ऑफ मेलाफाइट। After 30 years, you are challenging it. When she had joined in February 1984, you had no business to challenge it after 30 years. I am not concerned with the complaint. This petition is not maintainable. गो वारंटों की पिटीशन है क्या ये? हाँ बताइएगा, इसमें 30 साल बाद कैसे लगाई जा सकती है? आई एम नॉट, RTI एक्ट 2005 में आया। इसमें लॉर्डशिप एक चीज ये देखनी है कि 13 साल की उम्र में उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और टिल डेट लॉर्डशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 35 इयर्स ऑफ सर्विस लॉर्डशिप सी हैज नॉट सबमिटेड एनी डॉक्यूमेंट इन द डिपार्टमेंट। अथॉरिटीज देखेंगी, ये उन्होंने माना है लॉर्डशिप। नहीं वो होगा अथॉरिटी। एक इंक्वायरी का पार्ट देखना है, पेज नंबर सर, एक इंक्वायरी का पार्ट। ये सब ब्लैकमेलिंग है। आप हैं कौन? पेज नंबर आप हैं कौन? आप करते क्या हैं? आप ये तो बताओ। आप कैंडिडेट थे क्या सिलेक्शन के लिए? फिर ये पूरी विशुद्ध ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस पिटीशन है ये। आप ये तो डिसाइड कर दीजिए कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है। हाँ, श्री योगेश मोहन तिवारी, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम, प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन, सेम इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। Not my submission is also till 35 years of service. नहीं ब्लैकमेलिंग, इसके लिए दूसरा फोरम है। तो ये उन्होंने माना भी है। ठीक है, इन्हें आज तक कोई डॉक्यूमेंट तो उस फोरम में जाके अवेल करिए रेमेडी। फोरम दूसरा है आपके लिए। Period number 42. My lord, respondent number 4, Sir Dilip Pandey, out of station, adjustment file. देखिएगा, श्री प्रवीण दुबे, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री आपका शुभ नाम बताइए। धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी सबमिट्स दैट काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 इज ऑन एडजस्टमेंट। क्या मैटर क्या है ये? Compassionate appointment has been granted to 2 persons, that is wife as well as son, against a single slave which was occupied by their now. पिछली बार राजकुमार त्रिपाठी आउट ऑफ स्टेशन थे। आपने पिछले बार डायरेक्शन किया था कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया। हाँ, so as it relates to whether our claim is that the appointment 2 persons have received। कहाँ है ओरिजिनल रिकॉर्ड? कहाँ है? Where is the compliance of this order dated 12/1/2023? He is the employee of the municipal corporation. Who is appearing for municipal corporation? Adjustment लगा my lord। देखिएगा, there is non-compliance of order dated 12/1/2023. It is reported that counsel for respondent number 4 is on adjustment up to 6th April 2023. He is not appearing in any court. Full stop. List this case on 10 April top of the list with clear stipulation that compliance of the order dated 12/1/23 will be made, failing which municipal commissioner, municipal corporation Riva shall remain personally present. Serial number 43, Ajay Pal Singh। Lordship, I am praying a week's time to comply the last order. क्या है last order? Dated 27/2/23. जी, She is directed by the sports collector to inform the court how he has merge the two selection lists. 2 selection cases. And देखिएगा, there is non-compliance of order dated 27/2/2023. श्री अतुल द्विवेदी, लर्नेड पैनल लॉयर, प्रेज फॉर। कितना समय चाहिए आपको? 1 week. 7 days time to comply with the order. It is made clear that if order is not complied, then on the next date, Collector Anuppur, District Anuppur shall remain personally present. List on 11 April 2023. Serial number 44, Shri Sharad Gupta।
appeal by the employer. I am challenging the point of penalty imposed by the labor court. I am not appealing the quantum and the interest because it has been paid by the insurance company. But 25% penalty has been imposed by the commissioner without giving any opportunity of hearing as contemplated under section 4. आपको नोटिस शुरू हुआ था नहीं हुआ था? आप एक्स पार्टी थे? No. What had happened in the case? Initially, the case was dismissed. Thereafter, appeal was filed before this honorable. This honorable court demanded the appeal. Thereafter, the order because the disease was under influence of vehicle driving the vehicle. अरे आपका अवार्ड तो चैलेंज नहीं कर रहा है, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद आपने कंपनसेशन पे किया कि नहीं किया? नोटिस दिया था, लाइव दिया था, बस। तो फिर आप जानते हैं शरद जी, बिफोर इम्पोजिंग द पेनल्टी का कौन सा लॉ दिखाइए कि अलग से नोटिस देना है? यस, दिखाइए। आप भी कुछ जजमेंट लाए क्या? हम ये जजमेंट कोर्ट साहब, this is under 3 MPST, page 269, paragraph 7. The Commissioner for Workers' Compensation has also awarded penalty up to 25% of the aforesaid amount. It is true that under section 4A of the Act, the penalty can only be awarded after giving a so-called notice as to why it should not be passed and after providing the ये सोनी जी बताइए। सर इस तो सेक्शन में ही है कि विदिन ए नॉलेज फ्रॉम दी क्या दीजिएगा सेक्शन 4A वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन सेक्शन 4A क्या कहता है? पढ़िएगा, पढ़िए सोनी जी, 4A पढ़िए। If I am allowed to read one, अरे पढ़ने दीजिए। सेक्शन 4 हमारे पढ़िए, पेनल्टी वाला प्रोविजन तो पढ़िए, पन्ने क्यों पलट रहे? सेक्शन 4 अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन मतलब यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको। सेक्शन 4A 4A का बी पढ़िए, 3 का बी पढ़िए, बी के नीचे का प्रोविजन पढ़िए। बी का प्रोविजन Section 4A compensation to be paid when due the penalty for default. Compensation under section 4 shall be paid. कहाँ पढ़ रहे हैं वकील साहब आप? 4 का 3 पढ़ रहे हैं। Where any 4A का 3 पढ़ना है। 4A का 3 का B, clause B. If in his opinion, जी, if in his opinion there is no justification for delay, directed that the employer shall be deducted addition to amount of the arrears and interest. Therefore, the further sum not exceeding 50% such amount by way of penalty. उसके बाद provided that an order of the payment of penalties shall not be passed under class B without giving any reasonable opportunity to the employer to show cause why it should not be passed. This is a section 4A. Then my humble submission may kindly section see section paragraph number 21. इसके पहले सर पैराग्राफ नंबर 13 देख लें। 13 में इन्होंने स्पेसिफिक है कि they have given the different occasion, different averments in the different occasion. जवाब दावे में कुछ है, गवाह में कुछ है। मैं इसका सबसे नीचे के पैरा जो रेलिवेंट वो पढ़ रहा हूँ। यहाँ से दुर्घटना के समय P10 दुर्घटना के समय वाहन में मृतक और उसके साथ दिनेश सिंह था। घटना कैसे घटित हुई इसके संबंध में दिनेश सिंह ने पुलिस को बताया था कि पकड़ अनावधि की ओर से दिनेश सिंह के कथन नहीं कराए गए। दुर्घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। बीमा कंपनी वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस। इनको इनकी इंटीमेशन बताइए आप, इनको कब सूचना मिली? आफ्टर 10 मिनट्स। कहाँ है वो? पढ़िए इसी में। हाँ, दुर्घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी बीमा कंपनी ने पुलिस के अनुसंधान के आधार पर ही बताया गया था मृतक घटना के समय शराब के नशे था और उसकी लापरवाही से दुर्घटना घटी। मृतक दुर्घटना के समय शराब के नशे में न होने दुर्घटना घटी। इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्षी बीमा कंपनी का इलाज करने। सर पैराग्राफ 14। आपके साथ प्रॉब्लम ये है सोनी जी कि आप जो है इररिलेवेंट पढ़ते हैं। पॉइंटेड बताइए कि 10 मिनट में आप बोल रहे हैं सूचना मिली, उतना बता दीजिए बस। स्पेसिफिक लाइन, स्पेसिफिक पैरा। पैराग्राफ नंबर 14 के सबसे नीचे देखिएगा सर। हाँ जी। अनावेदक क्रमांक यहाँ से चौथी पांचवी लाइन है बॉटम से। अनावेदक क्रमांक ने 8 ने जवाबदार में उल्लेख किया कि वाहन रात 8 बजे के बाद चोरी हो गया था।
अनावेदक क्रमांक W2 ने न्यायालय के शपथ पत्र में बताया कि रात 9 बजे कार्य समाप्त कर मृतक घर चले। इसके भी अनावेदक क्रमांक 1 ने जवाब में यह किया कि रात 8 बजे के बाद वाहन नहीं मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट कर दी थी, जो कि परस्पर विरोधाभासी है। अनावेदक क्रमांक 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए यह उल्लेख किया कि वाहन रात 8 बजे के बाद नहीं मिला। प्राइवेट संस्थान में कार्य करने वाले ड्राइवर की ड्यूटी के समय निश्चित नहीं होता, यह भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करता है। और आफ्टर 10 मिनट्स बाद इनको सूचना मिली जैसे एक्सीडेंट हुआ। सर ये है But he has taken the vehicle unauthorizedly. Therefore, he lost it. We are not concerned with the unauthorized. आपको दुर्घटना की सूचना कब प्राप्त हुई और 30 दिन में आपने कंपनसेशन जमा किया कि नहीं किया? जी, now you are not disputing the liability. You are only on the part of quantum of penalty. Now, please tell me, for quantum of penalty, only one thing is to be seen, that whether there was delay on your part in depositing the compensation or not. Now, when did you receive the intimation? What it says, the law statement, when notice would be issued, and they will submit the reply if there is justifiable reason. बताइए ना, अभी आप बता दीजिए ना, आप पूछ तो रहे हैं आपसे, आप तो अपीयर हुए ना, एक्सपर्टी तो थे नहीं आप। हाँ तो बताइए क्या रीजन है आपका डिले का? Because we were saying that the vehicle was taking unauthorizedly, he was under the influence of liquor. ऐसा डिफेंस अवेलेबल है कि if you are disputing then you are not, बताइए पढ़िए। सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 3 पढ़िएगा। सेक्शन 3 सेक्शन बी 1B पढ़िए। Section 3, if personal injury is caused to a workman by accident, मतलब section 3 से start करो। 3 हाँ, if आप भी तो relevant पढ़िए। relevant 3B1 3B से पढ़ता हूँ। In respect of any injury not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributed to the workman having been at the time thereof under the influence of drink or drugs. ये तो it is admitted position he was drunk. अरे admitted position कैसे हो गई? ट्राइब्यूनल कह रहा है और आप उस फाइंडिंग को चैलेंज नहीं कर रहे कि ना डॉक्टर को एग्जामिन किया ना पुलिस वाले को एग्जामिन किया। FIR देख लें आप। अच्छा ठीक है, चलिए FIR देख लें, एग्जिस्ट रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें, MLC देख लें। ठीक, चलिए एनीथिंग। My point is that I have been settled with 25% penalty that could not have been without issuance of notice. I'll pass orders. On this point, another judgment is 1997 Supreme Court दे दीजिए। विकास कर मालूम, आप भी कोई जजमेंट लाएं कि ऐसे ही आए मिस्टर सोनी? पैरा 14 में जी कौन सा जजमेंट है? दिखाइए। जजमेंट पैराग्राफ नंबर 6 और 7 है कि डॉक्टर की एविडेंस नहीं कराई, ना किसी की एविडेंस कराई है, तो उस पे पेनल्टी के ऊपर लाए। पेनल्टी के ऊपर एक जजमेंट है जो अभी मैं बुक्स में है, मैं अभी हटा दीजिए। 5 मिनट नहीं, कुछ नहीं लेंगे इनका, 5 मिनट दे दूं। नहीं, ये तरीका नहीं है आपका। मतलब जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन। अरे भाई जब सुप्रीम कोर्ट है तो मद्रास हाई कोर्ट की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट सेज मतलब but on the point, specific point, without issuance of notice, the penalty would not be imposed to the ठीक, ठीक, I'll pass order। दे दी सर की डिफरेंट। आई एम अपनी कॉरेस्पोंडेंट नंबर 4 जी। इनकी फाइंडिंग सर लेबर जज साहब की जो इसमें डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट फाइंडिंग एवरमेंट से, तो ड्यू टू सपरेशन ऑफ फैक्ट है सर इनका, इसलिए सर इनको पेनल्टी जी बताइए। नंबर 6 में जो ऑर्डर किया है उसमें इस टाइम में कोविड पीरियड और कोविड पीरियड में अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट। कब से कोविड पीरियड अभी भी चल रहा है क्या? जून 21 में खत्म हो गया कोविड। उसमें ऑर्डर में नहीं लिखा है कि आपको केवल अमेंडमेंट कॉपी है। देयर वाज नो ऑर्डर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अमेंडमेंट। आप कर दीजिएगा उसको, हमने आपको अपॉर्चुनिटीज में आपने उससे डीलिस्ट कर दिया है। नहीं डीलिस्ट नहीं, इसको जाने दीजिए, फाइनल हियरिंग में जा रहे हैं। अदर ये अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन नहीं ठीक है, हो गया। रिस्पोंडेंट नंबर 4 की तरफ से रिस्पोंडेंट नंबर 4 की ओर से आपका नाम डालिए। श्री गुलाब चंद सोहानी। नंबर 72 लंच के बाद बताइएगा। फिर तो क्यों नहीं मेंशन किया सुबह आपने? मेंशन किया तो जूनियर पर नहीं लिख पाए, मतलब अगर जूनियर लिख नहीं पाता है तो उसका मतलब ही नहीं है। ऐसा जूनियर किस काम का जो लिख नहीं पाता? अरे उससे क्या होता है? हमने
सब वकीलों के सामने पेपर स्लिप दे दी कि जिसको केस मेंशन करना है लिख दीजिए उस पे। अगर आपने नहीं लिखा तो इट इज योर फॉल्ट, इट इज नॉट माई। May I make a mention for that matter has been transferred from court number 18 to this honorable court, my lord. But that I am making a request for item number 223, my lord. देख लीजिएगा जो नया आएगा। 223. भैया 72 नंबर आई ना, अच्छी देखिए तो दिखाई नहीं कुछ।
क्या कर रहे हैं आपने, क्यों नहीं लिख के दिया भाई वकील साहब? आप कहते हैं आपका जूनियर लिख नहीं पाया। अगर जूनियर सिर्फ नंबर नहीं लिख सकता, सीरियल नंबर, तो उसकी तो लॉ डिग्री जांच करानी पड़ेगी। मैंने तो कोई केस अपने हाथ से लिखा नहीं, पर्ची दे दी सुबह। आप लोग जिसको जो केस मेंशन करना है लिख दीजिए उसमें। उसके बाद आप बोलते हैं कि आपका लिख नहीं पाया आदमी, एंड देन यू मेक अ रिक्वेस्ट एट 1:30 कि वो केस ले लिया जाए। ये तो गलत प्रथा चालू हो जाएगी ना। आपको जो केस मेंशन करना था सुबह आप नहीं कर पाए, उसके बाद मैं कभी भी लूंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा। 4 बजे ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल 4 बजे तो मेंशन केस वैसे ही चालू होता है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं। होता है पास ओवर केसेस सीरियल नंबर 1 के बाद आपके बाहर के लोग अगर मेंशनिंग स्लिप मेंशन कागज फ्री हो, कागज के ऊपर नहीं लिख पाते कि ये केस आज मेंशन करना चाहते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ टर्न लूंगा, तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देन आई विल हैव टू एडजस्ट एनीबॉडी एंड देयर विल बी कंप्लीट chaos इन द कोर्ट। एब्सोल्युटली। बताइए सर, इसमें 2 कोई चीज की डील हुई थी। हाँ हाँ। और दूसरे से तकरीबन जो है केस इसका वैसे ही है जी। मैंने कॉपी ऑफ एफआईआर वगैरह फाइल्ड द कॉपी ऑफ द एफआईआर आल्सो। आपको पूरी तरह से याद है। आई डिड नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ दिस आर्टिकल बाय आर्गिंग वंस अगेन। ये था कि एक के फादर को इन लोगों ने मारा था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने लगाए हैं। ऐसे कि मस्ट टाइम हैज पास्ड सर सिंस ही इज इन कस्टडी। 5721 से कस्टडी में सर 5 गवाह टोटल हुए। 5 गवाह क्यों नहीं हो रहा है इसमें? सर कभी हमने भी समय लिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी वजह से कभी नहीं पड़ा होगा। और मरा जो आदमी है वो गन शॉट से ही मरा है। 149 पे फाइनली सर कितना कन्विक्शन होगा, कायम में होगा। 5721 से कस्टडी में। आपको कुछ कहना? मेरा निवेदन ये है कि सर इसमें जो कोएक्यूज की हुई है वो एज के फैक्टर से हुई है। और ये जो सर PW1 है, तो ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसने भी लाठी डंडे से मारपीट की है। श्री अनिल खरे, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री केजे मैथ्यू, श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, श्री संजय कुमार कुशवाहा फॉर द ऑब्जेक्टर। मैंने इसीलिए दोबारा आपका समय नहीं लिया कि मुझे मालूम है, मुझे याद है। आई नो इट। थैंक यू वेरी मच। सीरियल नंबर 20 सुन रहा हूं। Petitioner challenging the additional charge of respondent number 6, my lord. Respondent number 6, my lord, एक्चुअली उनका अपॉइंटमेंट मानचित्रकार की पोस्ट पे था मनरेगा में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। my lord उनको सब इंजीनियर का एडवोकेट। जी my lord, एडवोकेट है my lord, petitioner एज एन एडवोकेट। क्या परेशानी है? my lord जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सब इंजीनियर का। हाँ फिर? और my lord इनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है my lord, और इनको जो डिग्री वाले हैं उनका कार्य दे दिया गया। my lord ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? एनेक्सर P7 मैंने फाइल किया लॉर्डशिप। P7 जी बताइए। P7 में क्या लिखा है? P7 में यह है my lord विषय कार्य विभाग में निचले पद अर्थात अनुरेखक सहायक मानचित्रकारों के पद पर कार्यरत डिप्लोमा डिग्रीधारी कर्मचारियों को उपयंत्री पद पर नियुक्ति बाबत राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत विभिन्न कार्य विभागों में अनुरेखक सहायक मानचित्रकार के पद पर कार्यरत डिप्लोमा डिग्रीधारी कर्मचारियों को उपयंत्री पद पर नियुक्ति के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत कोटा निर्धारित किया जाता है। जी। कार्य विभागों में कार्यरत डिप्लोमा डिग्रीधारी अनुरेखक एवं सहायक मानचित्र क्या उल्लंघन हुआ बताइए? मतलब ये उल्लंघन कि सिर्फ डिग्रीधारी अनुरेखक को ही मिलेगा? मतलब ये इलीगल हुआ है। मतलब 5 इलीगल हुआ बताइए तो। मतलब इसके लिए एक नियमित एग्जाम लेना था। मतलब आगे लिखा है इसमें प्रतियोगिता परीक्षा। क्या लिखा है पढ़िएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, किसी भी नियुक्ति के समय 5% पद ही अनुरेखक सहायक मानचित्रकारों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। अब ये जो पोस्ट इनकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मानचित्रकार है और इनको सिर्फ रिकमेंडेशन के बेसिस पे। अरे आपका क्या अहित हुआ है ये तो बताइए। हमारा कोई अहित नहीं हो रहा। ये PIL है क्या?
PIL है क्या? जी मैडम। है जी मैडम। PIL है जी मैडम। तो फिर यहाँ गलत आ रही है, तो डिवीजन बेंच नंबर 1 में जाएगी, वहां समझाइए। PIL मेंशन नहीं किया इन्होंने, देखा कहाँ मेंशन किया? PIL का फॉर्मेट भी नहीं लगाया आपने। नोट विड्रॉ करके फिर से फाइल कर नहीं देंगे। नहीं नहीं, आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? तो समझा तो दीजिए, ये क्या है पेज 12 पर, क्या है ये कहाँ से मिला आपको? ये RTI से लॉर्डशिप। RTI से लिया? जी जी। ये मतलब आपका खुद का तो डिस्क्लोज करिए, आपका क्या एंटीसीडेंट्स हैं पिटीशन में लगाने के लिए, आप कैसे ऑथराइज्ड हैं, तो समझाइए तो हमको। मैडम हम एक एडवोकेट है लॉर्डशिप। हाँ, इसी के कारण हमें पता। एडवोकेट का काम है कोर्ट में एडवोकेसी करना। जी लॉर्डशिप। ब्लैकमेलिंग करने का काम नहीं है, ऐसा है क्या? मतलब हमने इसीलिए लॉर्डशिप लिखा भी है माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने रिकमेंडेशन की अरे आपको क्या हित हुआ ये बताइए। आपका कोई मुकदमा छीन के ले गया क्या ये? नो लॉर्डशिप। फिर इन्होंने मतलब करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है इससे। कैसे? अच्छा कहाँ लिखा है बताइए, करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है? पढ़िए, पैराग्राफ पढ़ के बताइए। इनके अपॉइंटमेंट से करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, बताइए, हम नोटिस इशू कर देंगे। बताइए, पिटीशन में पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है सर? .7 5.7 पढ़िए। that the present petitioner wrote a letter to CM and Minister of State Panchayat and Rural Development Department Madhya Pradesh and complained that respondent number 6 is Manchitrikar on the contract basis in Manrega, and respondent recommended and given additional charge of sub engineer to respondent number 6. It is against the rules. The copy of the annexure कहाँ लिखा है करप्शन के बारे में? आप विठल राव साहब ने? जी। आपने पक्षकार को बताया नहीं? तो वकील साहब ऐसी पिटीशन लगा रहे हैं, इसमें तो बहुत कॉस्ट लगना चाहिए, और इनकी सनद की जांच और करवा देते हैं कि ये वकील कैसे बन गए। विड्रॉ कर ले रहा हूँ मैडम। विठल राव, Lead counsel for the petitioner, being unable to convince this court about the maintainability and admissibility of this petition, which prima facie appears to be a blackmailing tactics in the hands of the petitioner who claims himself to be a lawyer, please for withdrawal of the application. Same is dismissed as withdrawn with no further liberty. Number 25. Lord, the petitioner worked as Samiti Prabandhak in a cooperative society. It's a marketing society. There are no service rules insofar as marketing societies are concerned. The board of the society, Lord, before the superannuation of the petitioner, decided to continue him for further 5 years. The said proposal, which was brought forward by the board, was also approved by the general board. On the basis of which, Lord, he continued to work. He was to retire in 2018. He continued to work up to 2020 when the board was in existence. Now, once the term of the board expired, Lord, and administrator assumed the charge, he retired the petitioner after 2 years, whereas his services was to continue up to 5 years. Therefore, he preferred a writ petition. In that writ petition, there was a direction that registrar may decide this dispute. So matter was referred to the registrar, from where the registrar has passed the impugned order, and he has said, my lord, that this cannot be done. It is the 60 years is the age prescribed for the retirement. Whereas my contention was specific, my lord, that there is no, he has not even referred, my lord, that there is no rule for, there are no service rules for. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अथॉरिटी बता दीजिए कि वो किसी भी आयु तक किसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना सा मैटर है? नहीं, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी दी होगी ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 48C। हाँ पढ़िए, लीजिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव एक्ट
And my case is in a better footing than board of directors because it has been also been approved by the general body in section 48. If your lordship would see first, पहले तो board of directors the board of directors is 48C block. 48C करिए जब ये होते हैं board of directors The powers of the board of directors are defined in 48C block. Yes. The board of directors of the society shall, in accordance with the bylaws, have powers to admit or terminate membership, elect the chairman, other office bearers and representatives. Yes, yes. बताइए जो relevant है उतना जी मैं बता रहा हूँ सर, एक से if your lordships would see 48C में clause E, if your lordships would see. हाँ E पढ़िए. Frame policies concerning organization and provisions of service to members. Provisions for services to members. जी. So where is the policy? Then qualification, recruitment, service conditions. Next, my lord. ठीक है तो where is the policy framed by the board? It does not say that they will be entitled to take ad hoc decision in regard to individual employees. It says that board of directors can frame policy. And I show the policy under which and further, my lord, in the next clause. जी. Qualification, recruitment, service. उसके बारे में policy बना सकता है. बताइए policy कहाँ है? तो policy दिखा दीजिए. That is not available. First, petitioner's contention is that petitioner who was working as manager of a cooperative society was given extension by the board of directors, which was approved by the general body of the said marketing society when petitioner attained age of superannuation on 31/12/2018 and gave him extension for a period of 5 years to work. Full stop. In the first round of litigation, next para, in the first round of litigation, petitioner had approached this court by filing WP 20049 of 2020, which was disposed of by the order dated 18 October 2022, directing the registrar cooperative societies to decide petitioner's representation dated 5/12/2020. Full stop. Next para. Now petitioner's contention is that the commissioner cooperatives and registrar cooperative societies has decided the representation and rejected the same without referring to the powers of the board of directors and the general body. Next para. After Shri Anil Lala has also placed reliance on section 48-C of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960, which deals with powers of board of directors, and reading from clause E छोटा वाला bracket के अंदर of section 48-C, it is submitted that board of directors is authorized to frame policies concerning organization and provisions for services to members, semicolon, qualifications, comma, recruitment, comma, service conditions of the staff and other matters relating to staff with the approval of the registrar, semicolon, and submits that since board of directors has the authority to frame service conditions with the approval of the registrar, comma, resolution of the board of director as approved by the general body could not have been tampered with by the registrar cooperative societies. Next paragraph. After hearing learned counsel for the party and going through the provisions contained in section 48-C within bracket small e, it is evident that board of directors has power to frame policies concerning matters mentioned above. Full stop. Shri Anil Lala is not in a position to show that any policy was framed by the board of directors and that was approved by the registrar, and in terms of that policy, board of directors had given approval for extension of service of the petitioner for a period of 5 years, which was taken to the general body for ratification. Full stop. Thus, in absence of there being any policy for which board of directors have been authorized to frame, comma,
impugned order cannot be faulted with full stop. Petition fails and is dismissed. Number 29. ये कौन सा? अच्छे से. Lords have put a question that whether she was holding the same charge or not. This is the order. She-wide order dated 22/9/2022. In para 3, my lord, of the order has been posted as नायब तहसीलदार को आगामी आदेश पर्यंत प्रभारी तहसीलदार मुशहरा के पद पर पदस्थ किया. Probably there was one item number 30, my lord. वहाँ जो दूसरा था आइटम नंबर 30 में, वो तो अधीक्षक उन्होंने प्रमोशन के लिए डीपीसी करी, स्क्रीनिंग कमेटी और चार्ज दे दिया, तो वहाँ सवाल दूसरा था, यहाँ सवाल दूसरा है. यहाँ इन्होंने ऐसी कोई डीपीसी नहीं करी है ऑर्डर से. इसमें सर देयर इज अ डायरेक्शन, जैसा मैं पहले आर्ग्यू बताइए. इसमें भी विभागीय छानबीन समिति प्रमोशन के लिए थी, किसके लिए थी? जी प्रमोशन के लिए. वो उसमें मैटर साहब ये था कि 31 तारीख को उसको रिलीव किया था सागर. वो तो अलग मैटर है, वो अलग कहानी है, लेकिन उसमें भी इशू तो ये था. पर इसमें भी साहब ये प्रमोशन का ही मैटर है. तो प्रमोशन क्यों नहीं दिया आपने? प्रभार देने के लिए डीपीसी करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? ऐसा प्रावधान है इसमें कि प्रभार देने के लिए डीपीसी करना पड़ेगी. तो फिर आप बता दीजिए जितने प्रभार देते हैं उनमें हम सब डीपीसी की. ये P1 के कंप्लायंस में हो रहा है साहब. ये P1 जो अर्लियर पिटीशन है. बहुत अच्छी बात है जी. P1 में क्या कहा है उन्होंने? जी सर, उसमें कहा है प्रमोशन के लिए. आप इस तरीके से सर्कमवेंट कैसे कर सकते हैं प्रमोशन के डायरेक्शन को? देखिएगा, पिटीशनर बाय श्री श्रेयांश पंडित, लर्नेड काउंसिल, full stop. It is petitioner is aggrieved of order dated 25/3/2023 passed by, wherein name of the petitioner appears at serial number 47, whereby petitioner in the name of promotion has been transferred from Satna as in charge Tehsildar Umaria. Stop. Next paragraph. It submitted that there is no provision for constituting a departmental scrutiny committee in the Madhya Pradesh Junior Administration bracket recruitment and service conditions bracket close rules 2011 to conduct DPC for giving charge of a higher post. Full stop. Next para. Shri Manas Mani Verma submits. It is further submitted that petitioner was already in charge Tehsildar, as is evident from order dated 22/9/2022 issued by collector and district magistrate Satna, copy of which is taken on record. Next. Shri Manas Mani Verma submits that whole proceeding was undertaken with a view to satisfy the orders of a coordinate bench of this court dated 27 February 2023 passed in WP 27393/2019, wherein a coordinate bench of this court has directed that all promotions cannot be withheld. It directed that respondents will consider the case of the petitioners for promotion to the post of Tehsildar in the light of the directions issued by this court in WP number 14029 of 2020 and 13241 of 2017, and also taking note of the order issued by the state government on 29/11/2016 within bracket annexure P2, and directed the authorities to complete the aforesaid exercise within period of 3 months from the date of submitting a copy of this order. Next paragraph. Thus it is evident. एक और सबमिशन. हाँ, पेज नंबर 31 में 31. आइए. कंडीशन 3 मान लेते हैं. कंडीशन 3. यदि कोई नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार का प्रभार प्राप्त करने से इंकार करता है या स्थानांतरित जिले में उपस्थित नहीं होता तो उसका नाम हटाया जा सकता है. ठीक है, लिख दे रहे हैं, वो भी लिख दे रहे हैं.
नहीं मैं इसमें तो इंस्ट्रक्शन लेके रिप्लाई फाइल करूंगा साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी और ये दे आर नॉट अपीयर दैट माय लॉर्ड, ऐसा हो सकता है। बात पूरी आ जाए जी साहब। कल को फिर आपको ये रहता है ना कि बात पूरी नहीं सुनी। नहीं वो मैं निवेदन करना पड़ता है रिट अपील लगाने का। नहीं मैं निवेदन बस कर रहा हूँ साहब। उसको आर्ग्यूमेंट पूरा आ जाए जी सर। फिर तो जो करना है आपको वो आप करेंगे। मैं रिप्लाई पर्सनल एफिडेविट फाइल कर देता हूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है। लिखिए। हाँ क्या लिखा? Evident, it is further submitted that as per clause 3 of the impugned order of transfer, a Nayab Tehsildar refuses to accept the charge of Tehsildar or fails to appear in the transferred district, then his name can be removed. Full stop. Next paragraph. Now the question arises that when petitioner is already working as in charge Nayab Tehsildar, then how can her name be removed, and whether the condition number 3 as read over by Shri Manas Mani Verma is per se illegal and is a coercive tactics to cover up the lapses of the state government in not granting regular promotion to the general category candidates despite specific directions of coordinate bench of this court passed in WP 27393 of 2019, and whether they have made themselves liable to face contempt proceedings for deliberate non-compliance of the orders of the High Court, in as much as at present there is no material available to show that said order dated 27 February 2023, in compliance of which learned government advocate submits that I am praying 2 weeks time for filing personal affidavit of the rebel. हाँ बिल्कुल सब पूरा टाइम मिलेगा. Proceedings were undertaken. Full stop. Shri Manas Mani Verma prays for time to file personal affidavit of the Principal Secretary of the Revenue Department in this regard, that how can they circumvent and not grant regular promotion as per the recommendations of the DPC and simply transfer a person from the capacity of in charge Tehsildar to the same capacity of in charge Tehsildar without showing any administrative exigency in this regard in the garb of so-called higher responsibility and promotion. Full stop. Principal Secretary will also show that whether by virtue of giving charge of Tehsildar, whether petitioner will be entitled to higher pay scale admissible to the post of Tehsildar and the consequential benefits. Let affidavit be filed by the Principal Secretary within 2 weeks. Till then, operation of the impugned order as far as it relates to the petitioner shall remain stayed. It is made clear that if Principal Secretary fails to file an affidavit, then this court may be constrained to order for his personal presence. Serial number, this serial number 45. Aman Jain. May kindly peruse the last order. There was a specific direction to file the reply. As far as respondent number 4 is concerned, already filed. Respondent number 4 has filed their reply. Lordship, It is still awaiting. 2 weeks time and file reply. कितना? 2 weeks time. 2015 की पिटीशन है, 23 चल रहा है. क्या ऑर्डर से दुखी हो गया आप आए? रिकवरी ऑर्डर है. श्री आपका शुभ नाम बताइए. अर्जुन वाजपेयी. श्री अर्जुन वाजपेयी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री अतुल द्विवेदी, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट. Shri Nair for respondent number 4. SP Nair for respondent number 4. Next, Shri Atul Dwivedi again prays for time to file reply. Full stop. This petition is pending since 2015. State has not filed reply till date, subject to payment of cost of rupees 10,000 to be recovered from the hearing official and not to be debited to the public exchequer. 2 weeks time is granted to file reply, failing which District Treasury Officer and
District Pension Officer Damoh shall remain personally present before this court. List on 25 April 2023. Cost to be deposited in High Court Legal Services Committee. During this case, reply is awaited. Matter is 2000. में भी सेम ऑर्डर करिए 2016 की पिटीशन है 10,000 रुपए कॉस्ट लगाइए और पर्सनल प्रेजेंस करिएगा इसमें क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैटर है ये कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बालाघाट शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट सेम डेट सेम ऑर्डर जवाब किसको देना है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कौन आता है इसमें notice has been issued मतलब 1 and 2 को नोटिस जारी हुए थे HP पटेल had appeared for respondent number 3 H पटेल कौन है ये इसमें लिखिएगा कॉपिया करिएगा नहीं नाम नहीं आ रहा है कॉज लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है वो आप ये वकालतनामा नहीं फाइल करेंगे तो क्या करेंगे श्री H पटेल had appeared for respondent number 3 on 14/9/2016 and had accepted notice. Thereafter, on 2/12/2016, counsel for respondent number 3 नहीं 2/12/2016, 6/1/2017, counsel for respondent number 3 had sought time. Then on 8/2/2017, State Council had sought time. On 10/3/17, 10/4/17, time was sought by Learned Council for respondent number 3. Full stop. Issue SPC to respondent number 3 and subject to payment of cost of rupees 10,000. Full stop. It is made clear that if respondent number 3 had not authorized Shri H Patel to appear on their behalf and accept notice, then they will be entitled to institute appropriate proceedings against Shri H Patel and make recovery of the cost from Shri H Patel, who had accepted notices on behalf of the respondent number 3. Serial number 47, Saket Agarwal, 21.16. I'm praying for a week's time. Mr. Agarwal has made a request before my lords. Due to urgency. शुभ नाम बताइए आपका गौरव महेश्वरी श्री गौरव महेश्वरी प्लीज फॉर टाइम आगे तो a week's time as arguing counsel is not available ji I am in contempt matter respondent that is 47. You are in contempt matter or you are in contempt I am not in contempt बस आराम से क्या जल्दी है on request case is adjourned इनका 47.1 में वादवा सबका नाम डाल दीजिएगा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब IR to continue list this case peremptorily on 13 April 2023 with clear stipulation that no further adjournment will be admissible on the request of the petitioner counsel. Number 48 भूपेंद्र कुमार मिश्रा इसमें सर 2 हफ्ते का समय चाहिए एडिशनल रिप्लाई फाइल करने में सर कब आया था रिप्लाई So last date of hearing, my lord has queried that 16/3/23 को by way of last indulgence, 2 weeks time is granted to file additional reply as was granted in terms of order dated 16/3/2023. List in the week commencing 24 April 2023. Serial number 49. Manavani Verma. My lord, in this case, reply of respondent number 2, 3 and respondent number 5 is awaited. My lords, may kindly see the last order sheet of 2/2 of 53. Lordship has imposed penalty of 5,000 rupees and
In failing to file the reply, the respondent number 3 shall be personally privileged. My lord, I just inquired with my lord telephonically, my lord. Mr. DK Srivastava, Mr. TK Srivastava has been appointed on last week only in this post, my lord, and he was not aware of the order, my lord. That's what. Well, I'm just. वो तो ठीक है, जवाब फाइल करने में लास्ट वीक से अभी तक टाइम नहीं, जवाब क्यों नहीं फाइल किया? My lord, I've been informed, my lord, that the records pertaining to this matter, my lord, is with the collectorate, my lord, and therefore they have wrote a letter to the collector. Wrote a letter? Sorry, my lord, they have He's supposed to go to the collectorate and collect the records. Yes, my lord. When did he collect the records? My lord, he was here, my lord, on last. जवाब फाइल करेंगे. My lord, the last 10 days time may be given, my lord, as of last. To further cost of rupees 5,000. There is non-compliance of order dated 2/2023. Subject to payment of further cost of rupees 5,000. 2 weeks time is granted, failing which respondent number 2 shall remain personally present along with respondent number 3 before the High Court. List on 19 अप्रैल 2023. Kindly, may I make a humble submission? Reply of respondent number 2 is also important in this. कर तो दिया ना, तो 3 ही तो है OIC. चलिए. Kindly mark my presence in respondent number 4. आपका शुभ नाम लिखिएगा. Akshan Srivastava. अक्षर श्रीवास्तव. Respondent number 4. आपको जवाब नहीं देना है. Sir, we have already filed. ठीक, चलिए. दिव्य कृष्ण दिलैया. 49.1 कनेक्टेड मैटर में भी सेम ऑर्डर करिएगा, फर्दर इसके ऊपर भी कॉस्ट लगा दीजिएगा. उसमें भी जवाब नहीं है ना कनेक्टेड में. हाँ, दोनों में अलग अलग कॉस्ट लगाइए. Serial number 15. Lord, this is the matter, my lord, wherein I am saying regularization from the date by which the juniors were regularized. My lord, the petitioner was initially appointed as deliverer on 14/12/1983. My lord. 14/12. 1983. My lord, which is evident from the annexer P1, relevant. Yes, my lord. My lord, after my respondent issued regularization policy, that is annexer P2, page 18, my lord, dated 19/1/1990, my lord. Page 18, my lord. May I read, madam? हाँ ठीक है, मालूम है. Yes. Thereafter, my lord, the respondent regularized the petitioner by the order dated 21/12/1995, my lord. That is in the P3, page 20, my lord. आपका नाम किस सीरियल नंबर पर है? इसमें yes, sir, page 20, my lord. Serial number 4, my lord, page 21. My lord, thereafter, my lord, may kindly see annexer P4, page 24. This is the regulation order of private respondent number 5, my lord, who had been regularized by the order dated 9/2/1988, my lord. He is junior to me, and not he was regularized before me. My lord, may kindly see annexer. क्या जवाब है आपका? ठीक है. My lord, we have filed a return, my lord. And my lord, first of all, my submission is, my lord, that petitioner earlier has filed one petition, my lord, in which, my lord, he has not taken this ground, my lord, even though, my lord, that petitioner respondent, private respondent at that time was. चलिए छोड़िए इस बात को, भी तो मुद्दे की बात पर आइए आप. But there was एक, जब आप रेगुलाइजेशन रखते हैं तो कोई सीनियरिटी लिस्ट वगैरह बनाते हैं, नहीं बनाते? ये स्टेट लेवल पे रेगुलाइजेशन है कि कलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है? Show from records that the private respondent was not junior to the petitioner and he was entitled to be regularized in preference to the petitioner. या किन कारणों से आपने petitioner का नाम छोड़ दिया था 1988 में? दो चीजें लिखी हैं आपने अपने जवाब में, कि वही हवाई जवाब आप लोगों का. Respondents have not answered two specific points which are necessary for disposal of this case, namely whether plea taken by the petitioner that private respondents number 5 and 6 who were regularized on the post of sub-engineer while order dated 9/2/88, annexure P4 were junior to the petitioner or not. In terms of the date of initial appointment, and if
they were junior to the petitioner, then why petitioner was not regularized and in preference to regularized till 21/12/1995 in preference to the private respondents and why private respondents were given preference. No such material is brought on record by the state. It's a full stop. Its reply is cryptic and silent on these vital aspects and is full of hyper technicalities. Full stop. Let affidavit of the engineer in chief, Public Works Department be filed in this behalf, clarifying the legal position, failing which engineer in chief shall remain personally present. List is seized on 2 मई 2023. Period number 51 से कपिल चंद्र श्री टीसी गुप्ता एनहेंसमेंट 3 कनेक्टेड मैटर है, तीनों हमारी अपील है। बताइए ना, एक करके बताइए जी। सर MA 3088/90 किसकी मृत्यु हुई है? लॉर्डशिप बनब सिंह है, हस्बैंड थे। बनब सिंह है, फादर थे इनके। एक्सीडेंट डेट लॉर्डशिप 14 अप्रैल 2016 है। एज इनकी लॉर्डशिप 47 इयर्स थी और डिपेंडेंसी 1/4 आई है, 6 उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, 5 बच्चे हैं लॉर्डशिप, एक पिता थे उसके 75 साल के। जी। 6 में कितनी होती है डिपेंडेंसी? सरला वर्मा में है 1/5 होती है। 6 से ऊपर में होती है, 1/4 लगी। हाँ 1/4 तो लगेगी। इन्होंने कितनी लगाई? सर 1/4 लगाई सर। दो ग्राउंड है अपील के। सर फ्यूचर ग्रोथ 25 की जगह 10% लगाई है। 47%, 47 की एज है। 47 की एज है। हाँ। और दूसरा सर क्या करते क्या थे ये? सर ये फार्मर थे। अच्छा ठीक है। 7000 इनकम प्रोस्पेक्ट जो है वो 25% लगेगा। ठीक है। और सर कंसोर्शियम नहीं दिया है। कंसोर्शियम किसको मिलेगा? सर बच्चे हैं इनके 5 और फादर भी ओल्ड है, 75 इयर्स के। माँ नहीं है इनकी? माँ नहीं है इनकी। अच्छा ठीक है। दिस अपील इज फाइल्ड, इतना कॉमन रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ नंबर बदलेंगे। फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स बीइंग एग्रीव्ड ऑफ अवार्ड डेटेड 13/12/2018 passed by learned second additional motor accident claims tribunal Bhopal in claim case number 1023/2016 in claim case number 1025/16 on 2 grounds, namely deceased was aged about 47 years. Therefore, as per the law laid down by Supreme Court in judgment Pranay Sethi, up to the age of 50, 25% future prospect was required to be added, whereas tribunal has added only 10% towards the future prospects and secondly, in terms of the law laid down by Supreme Court in Sakwinder Kaur, loss of parental consortium is not awarded in favor of 5 children who were claimants before the tribunal. Next paragraph. Shri Gupta, appearing for the insurance company, opposes the prayer for arrangement. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that claimants will be entitled to a sum of ₹40,000 each, totaling ₹2 lakhs for loss of parental consortium in the light of decision of Supreme Court in Sakwinder Kaur. Next paragraph. Tribunal has awarded a sum of ₹9,25,900 in favor of the claimants. Full stop. It has taken income of the deceased at ₹7,000 per month
and after making 1/4 reduction, 63,000. has added only 10% towards future prospects, which needs to be 25%. Therefore, after making 1/4 reduction towards the living expenses of the disease, when 25% is added towards the future prospects, then net dependency of the claimant will come out to rupees 78,750 per annum. मतलब इसमें 16 में 7,000 लिया 65 से. As per the law laid down by Supreme Court, in case of Sarla Verma, multiplier of 13 will be applicable, taking total pecuniary compensation to rupees 10,23,750, over and above which a sum of rupees 30,000 will be payable under the head of last right and loss of estate. Full stop. Besides this, as mentioned above, a sum of rupees 2 lakhs will be payable under the head of loss of parental consortium. Thus, claimants will be entitled to a sum of rupees 12 lakhs 53,750 as against a sum of rupees 9 lakhs 25,900 awarded in favor of the claimants. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 3 lakhs 27,850, which will be admissible to the claimants. कितना वैल्यूएशन किया आपने अपील सर का? 1.5 लाख का हम कोर्ट फीस भरवा दूंगा मैं. हाँ, अभी 4.5 के पहले भर दीजिए, पुलिस भर दें तो ये पूरा दे देना, इसको सबको इन्वेस्ट करा देना इन द जॉइंट नेम्स in a monthly income scheme of post office or the nationalized bank. Sir, at same interest rate. Same interest. Other terms and conditions shall remain in check. आप 51.1 में लिखिएगा, slide दीजिए. MA 3104/19 बल्ली भाई. इसमें जो वो 1025 था उसकी जगह 1023/16 आ जाएगा. ठीक है. Deceased was श्री राम गुजरिया. आयु कितनी थी? सर 39. टीचर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे. इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कितना जोड़ा है? 10% ही जोड़ा है. इसमें 50% जुड़ जाएगा. In the light of Supreme Court. इनकम कितनी मानी है? सर इनकम इनकी मानी है 19,768 रुपए. 19,768 रुपए. और 1/4 रिडक्शन किया है? जी सर. 19,768 पर मंथ. जी. डिडक्शन इनकम टैक्स हो जाएगा. इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा. इनकम टैक्स हो जाएगा. 16 में तो कितने तक फ्री था? 2,37,000 ही तो आता है टोटल. इनकम टैक्स कहाँ से डिडक्ट हो जाएगा? ठीक है सर. कंसोर्शियम चाहिए. 1/4 is to be deducted towards the living expenses. Then annual dependency will come out to rupees, and then 50% is to be added towards future prospects, as deceased was a government teacher aged about 39 years. And then when multiplier of 15 is applied, it will take total. कितना बताया था? 2 लाख. 266,868. 266,868 पर मल्टीप्लाई लगेगा 15 का. ये फिगर आ गई थी क्या? 266. आपके पास कौन सी फिगर आई थी अभी? 25% डिडक्ट करने के बाद में कोई फिगर आई थी? डिपेंडेंसी काट के बताओ. एक सेकंड. हाँ, एक सेकंड. 19,768 पर मंथ. और एक सेकंड लिख जाइए. और रुपीज 2,37,216 per annum. 1/4 is to be deducted towards the living expenses. Then the amount will come out to rupees 1,77,912. ठीक है. 50% will be added towards the future prospects. ठीक है. That will come out to rupees 2,66,868.
Full stop. As per the age bracket, multiplier of 15 will be applicable, taking total pecuniary compensation to 40 lakh 3020 4003020, over and above which claimants will be entitled to a sum of rupees 70,000 under the head of non-pecuniary compensation, and 4 of the children will be entitled to a sum of rupees 40,000 each under the head of loss of parental consortium, taking total compensation to rupees 42 lakhs 33,020 as against कितना दिलाया ट्राइब्यूनल 29,60,900 29,60,900 as against the sum of rupees 29 lakhs 60,900 awarded by the tribunal. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 12,72,120. कोई सेम इन्वेस्ट करा दीजिएगा कमें फॉर पीरियड ऑफ सपोज 10 साल के लिए कर दीजिएगा 11.5 लाख का एवैल्यूएशन, तो 11.5 लाख का एवैल्यू बाकी का दे दीजिए आप कोशिश बाकी में दे दें तो ठीक है, नहीं कुछ तो भी खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड केस दीजिए इसमें, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। आप कर देना सब में डिले का नोट कर देना। कितने दिन की डिले है? हाँ 100 दिन तक की डिले तो ठीक है। ये इसमें ये दिस अपील इज फाइल्ड, इसमें क्लेम केस नंबर है 1022। ठीक है, इसमें किसकी डेथ हुई है? सर इंजरी केस। इंजरी केस है, आप बताइए इसमें क्या बनाना है? सर आप देख लीजिए, फ्रैक्चर ऑफ टिबिया बोन था इसका, पैरा 27 ऑफ दिया है सर। 14% का दिया था एक लेग के लिए, परसेंटेज डिसेबिलिटी का। करता क्या था ये? करता क्या था सर? होटल चलाता था खुद का खाने पीने का। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उसकी फंक्शनल डिसेबिलिटी क्या आई? सर ऐसा तो नहीं, डॉक्टर ने 14% का एक लेग के लिए दिया। ऐसा नहीं है तो कैसा कैसा माना जाएगा? किस हेड में दिलाया डॉक्टर साहब कोर्ट ने? सर फ्यूचर ट्रीटमेंट दिया है। और कहाँ है, किस पैराग्राफ? सर फ्यूचर ट्रीटमेंट पैराग्राफ 56 में है। सॉरी नॉट ट्रीटमेंट, सॉरी नॉट फ्यूचर ट्रीटमेंट सर, ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल बिल्स कंपेंसेट किया है पैरा 56 में। ठीक है, और लॉस इसमें लॉस ऑफ इनकम दिया है 6 महीने का 42,000 रुपीज पैराग्राफ 53 में, और जनरल डैमेजेस दिए हैं 75,000 रुपए पैरा 52। फिर और क्या ले लेंगे आप? सर एज वेदना में एक मुश्त 75,000 42,000 ये दे दिया। सर ट्रांसपोर्ट और सर स्पेशल डाइट, अटेंडेंट, फ्यूचर ट्रीटमेंट। लिखिए चलिए, इसमें बढ़ाइएगा और लैंग्वेज बना लीजिएगा। अच्छा मैं दिखाई देता हूँ। Is agreed of it 9,000 तो आ गया ना। Petitioner submits that he has not been paid any amounts under the head of transport, attendant, nutritious diet and future treatment. Full stop. Claimant had sustained fracture of किस चीज का फ्रैक्चर था? सर टिबिया। टिबिया कौन से टिबिया? राइट लेफ्ट? सर राइट टिबिया बोन। Full stop. Taking this fact into consideration that this fracture takes about 12 to 16 weeks to heal, and the date of accident is 14/4/16, the sum of rupees 16,000 is awarded at the rate of rupees 4,000 per month under the head of nutritious diet 16,000 रुपए सेम रेट पर 4,000 रुपए पर मंथ, अटेंडेंट 5,000 रुपए ट्रांसपोर्ट और 10,000 रुपए फ्यूचर ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा 32 और 10 42 और 5 47। Thus there will be addition of 47,000 in addition to what has been awarded by letter traffic. Appeal is disposed. Record be sent back. Highly okay. Number 52. Next minute awarded. Lord, may I make a small submission before the learned addresses
Honorable Court, on the last date, that is on 1/3/2023, my lord have considered the merits of the case, pursuant to which a specific query was put to the respondent. Two queries have been put. It is a case where the petitioner has been punished with a fine, paid an extra P5, and on the same set of facts, charge sheet has been issued. My lord, my lord may kindly appreciate the second last para, where my lord have put the query. May I read? ठीक है, नहीं, I have understood. Yes, where is your reply? My lord, we have filed an IA, my lord, 4136 of 2023, my lord. My lord, answering the queries, my lord, which my lord has raised, my lord. किस तारीख को फाइल किया आपने? My lord, we have filed it on, my lord, 29/3, my lord, 2023. And my lord, in 22 मार्च वाली action taken report. yes, my lord. And in my lord, para 5, we have para 5 पढ़िए. my lord, it is respectfully submitted that the IG of police is having vested with such power as conferred under Rule 223 of MP Police Regulation, and rule read with 215. Then it is clear that the Inspector General of Police is competent to issue or inflict the punishment of 5,000 to a non-gazetted officer. नहीं, वो तो ठीक है. ये तो पेनल्टी हम आपसे दो बातें अलग अलग समझे ना. 215 पढ़िए, कभी सीधे पुलिस रेगुलेशन में 223 और 215 पढ़ते हैं. आपने यहाँ इशू अलग अलग है. आपने जवाब न देने की 5,000 रुपए अलग पेनल्टी दी है और शो कॉज नोटिस की लाइट में अलग इसमें हुआ है क्या है सर, ये बोल रहे हैं कि जो हमने पेनल्टी इम्पोज करी है वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई फाइल करने के डिले के कारण, जबकि वो एनेक्सर P5 यदि देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिक है कि पेनल्टी P5 है, पेज नंबर 27. इसमें स्पेसिफिक है कि द शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड ऑन 1/4/2019, pursuant to which this fine has been imposed. This notice was served on the petitioner on 6/4/2019. अनुशासनहीनता करने पर प्रस्तावित दंडादेश. प्रस्तावित जो है वो 1/4 का है. 1/4 में dereliction of duty है. शो कॉज नोटिस कहाँ है? पेज नंबर 26. पेज 26. हाँ, ठीक है. पेज नंबर 20. जवाब कब दिया आपने? जवाब कब दिया आपने? मतलब, though I have not challenged this order. This order has been was attained finality. Fine has been imposed. Then what you have challenged here? Before this honorable court, in this writ petition, I have challenged the charge sheet, that is Annexure P1. The charges were the same that or for which I have been punished. नहीं, तो ये तो कारण बताओ नोटिस का समयावधि में ना देने पर. समयावधि में प्रस्तावित जो था सर, उसमें वही यही इनका जो बोलना है वो misreading of this शो कॉज रीडिंग नहीं. I have understood it. Sorry. No, my lord. You should have challenged this order. My lord, for a moment, my lord, the reason why this petition has been filed is that once I have been penalized for not clarify. For not concluding the investigation or keeping the investigation pending. Thereafter, charges have been. My lord, may kindly appreciate for a moment the Annexure P4. P4, yes. के अंतर्गत लेख है कि आवेदक ऋषि कुमार जगवानी सो एंड सो शेडोल द्वारा थाना सुहागपुर में दिनांक इतने the complaint was made prior to joining of the petitioner, एंड इतने में को शशांक गुप्ता हुंडई शेडोल द्वारा विक्रय बिलों में कूट रचना एवं फर्जी बिल, फर्जी बीमा दस्तावेज, फर्जी इंश्योरेंस तैयार कर मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना किए जाने संबंधी शिकायत पत्र की जांच आपके द्वारा की जा रही है, जो लगभग 5 माह से अधिक से अवधि से जांच में होना पाया गया। उक्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय द्वारा भी कार्यालयीन पत्र दिनांक इतना पुलिस अधीक्षक शहडोल को पत्र लिखकर संपूर्ण जांच प्रतिवेदन से अवगत कराए जाने हेतु बार बार पत्राचार किए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा शिकायत की जांच अभी भी पूर्ण
जब आपने एक बार पेनल्टी कर दी तो उसी सेट ऑफ फैक्ट्स पर इंक्वायरी कैसे हो सकती है? मतलब चार्जशीट हैज बीन इशूड मतलब फॉर डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या फैक्ट्स है? इन मतलब दिस मतलब 5 पढ़िएगा क्या आरोप है? मतलब ये जो इनके द्वारा मतलब लापरवाही बरती गई थी मतलब पुलिस अधीक्षक शेड्यूल के पत्र क्रमांक संपूर्ण जांच प्रतिवेदन के अवगत कराए जाने हेतु बार बार पत्रचार किए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा शिकायत की जांच अभी तक पूर्ण न करते हुए वही तो उसी के ऊपर तो आरोप पत्र है। मतलब ये जो 5,000 का जो कॉस्ट मतलब इन पे इम्पोज किया गया था मतलब बिकॉज ही वाज नॉट आंसरिंग टू द प्रस्तावित क्यों लिखा है? आपके आईजी साहब को हिंदी नहीं आती क्या? प्रस्तावित दंडादेश क्यों लिखा है पेज 26 पर? और फिर 27 पे भी लिखा है प्रस्तावित दंडादेश वॉज प्रस्तावित नॉट फॉर फाइलिंग रिप्लाई, इट वॉज प्रस्तावित फॉर कंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन इन टाइम एंड देन यू गेव प्रस्तावित दंडादेश। प्रस्तावित दंडादेश आपने लिखा है पेज 27 पर, लिखिए। इफ इट इज रीड एज समयावधि में जवाब प्राप्त ना होने का। नहीं सॉरी, फिर प्रस्तावित कैसे हो जाएगा? समयावधि में जवाब न देने का तो कोई प्रस्तावित दंड था ही नहीं। मतलब देखिएगा अंडर मतलब सेक्शन 250 मतलब हाँ वो पढ़ लिया। शरीफ, आपका शुभ नाम बताइए। वैभव तिवारी। वैभव तिवारी, आपका तो वकालतनामा ही नहीं है, क्या बात है? On the last, in fact, right from the beginning, I was appearing. Also for the petitioner has assailed issuance of charge sheet dated 13/8/2019 by the Superintendent of Police District Schedule as contained in Annexure P3 on the ground that earlier Inspector General of Police Schedule had issued a show cause notice dated 1/4/2019 contained in Annexure P4 on the same subject matter, proposing a penalty of 5,000 rupees for committing the negligence oblique dereliction, full stop. And thereafter, the petitioner was visited with the said penalty by order dated 12/4/2019, which is not the subject matter of challenge. Petitioner's contention is that once petitioner was penalized for a particular alleged misconduct, then inquiry could not have been initiated on the same set of charges. Next paragraph. Shri John, yes, Shri John submits that they have filed action taken report in which it is mentioned that Inspector General of Police is vested with such power as conferred in Rule 223 of Police Regulation and 215 of the Police Regulations, and is competent to inflict punishment of rupees 5,000 to a non-gazetted officer. Full stop. Next paragraph. It is submitted that penalty of rupees 5,000 was imposed on account of non-filing of the reply and not for the proposed misconduct for which show cause notice was issued. Next paragraph. When this regulation 223 is read, then it reads as under. ये copy कर दीजिएगा. And this is read with Police Regulation 215. Then punishment which can be imposed by the Inspector General of Police on officers from constable to inspectors is crystal clear. There is no provision for imposition of penalty for not filing reply in time. Full stop. This becomes further clear from the fact that
filed Annexure P4 dated 1st April 2019. Show cause notice was issued pointing out dereliction of duty in regard to the subject matter of the complaint, and it was proposed that why a penalty of ₹5,000 be not imposed on him for the said dereliction of duty / negligence. Full stop. In order annexure P5, it is nowhere mentioned that punishment is on account of delay in filing or not filing the reply to the show cause notice. It relevant provision reads as under. जारी within inverted commas जारी नोटिस का जवाब समय अवधि में न देने की अनुशासनहीनता करने पर, ये पेज 27 पे है, मैंने निशान लगा दिया, इसको कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा. Thus it is evident that proposed penalty of ₹5,000 was imposed. Annexure P4 makes it clear that penalty of ₹5,000 was proposed for keeping the investigation pending, which is the subject matter of the charge sheet issued by Annexure P1, and not for delaying the reply or not filing the reply. And therefore, a person cannot be penalized twice for the same misconduct. Full stop. That will result in double jeopardy and will be against the provisions contained in Article 20 within bracket 2 of the Constitution of India. Thus, impugned charge sheet deserves to be quashed and is hereby quashed. Obliged. The counsel of this case is arguing court number 24, Lordship. Shri, आपका शुभ नाम बताइए. शशांक पांडे, Lordship. Shashank Pandey submits that counsel of this case is arguing before court number 24. Full stop. Case is admitted for final hearing. Pleading जवाब अगर आ गया ना आपका. जवाब आ गया तो my lord, on the last date of hearing, my lord have asked for the records pertaining to the my lord, we have them taking further 15 days time for that. ठीक है. Record of the case in compliance of the last order sheet is yet not available. Shri John prays for and is granted 4 weeks time to bring the record list after 4 weeks. Serial number 54, Rakesh Singh, case Vijay. लास्ट ऑर्डर शीट में रिसीव मालूम वो तो एडजस्टमेंट पर है. मालूम स्टेट गवर्नमेंट को का जवाब, इनका जवाब आ गया. अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लास्ट डेट स्टेट गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू फाइल. क्या हुआ आपके जवाब का? My lord, we have communicated the my lord's order followed on 1st March, my lord. किसको कम्युनिकेट किया? My lord, ये कलेक्टर को कर दिया था. चल लिखिएगा. श्री राकेश सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री अजय तिवारी फॉर एनसीएल मैनेजमेंट. Respondent number 1, 2, 3. Shri John, learned panel lawyer, submits that order dated 28/2/2023 was communicated to the collector Satna on 1/3/2023, but collector Satna has not given any response. Full stop. In view of said facts, let compliance be made within 2 days, failing which collector Satna shall remain personally present. List this case. 6 अप्रैल 2023. Number 55, Mr. Ransu Kumar Singh.
My lord, petitioner is challenging annexure P1, my lord. Page 10. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिका समाचार पत्र के अंक दिनांक 7/3/19 के वृत्त ऑफिस असिस्टेंट चौकीदार एवं सफाई संरक्षकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। पदों की पूर्ति हेतु मात्र सफाई संरक्षकों के पद पूर्ति की कार्यवाही चल रही। शेष वृत्त ऑफिस असिस्टेंट एवं चौकीदार के पदों की पूर्ति विषय कार्यवाही कतिपय कारणों से निरस्त कर दी गई। My lord, annexure P2, my lord, page 11. ये संयुक्त संचालक 2/10/2017 में एक लेटर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देते हैं। संदर्भ जवाब आ गया क्या? जी आ गया। क्या कह रहे हैं आप? लॉर्डशिप का ये कहना है कि संयुक्त संचालक द्वारा लॉर्डशिप मुझे इन पदों की नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन लॉर्डशिप जब इस पद को देखा गया कि वृत्त आबलिक ऑफिस असिस्टेंट ये गजट में पद ही नहीं था। आपके यहाँ पद ही नहीं, क्या पद है वो बताइए? जी वही लॉर्डशिप माय रिप्लाई R51 में लॉर्डशिप R51 गजट लॉर्डशिप इसमें क्या पद है? इसमें माय लॉर्ड पेज नंबर 17 में माय लॉर्ड, पेज नंबर 17 ये पैरा 11 माय लॉर्ड। ऑफिस असिस्टेंट का पद तो लिखा हुआ है माय लॉर्ड, लेकिन जो विज्ञापन में माय लॉर्ड जो पद है उसमें भृत्य ऑफिस असिस्टेंट, अब भृत्य पद ना होने के कारण भृत्य और ऑफिस असिस्टेंट अलग अलग है। जी लॉर्ड, भृत्य और ऑफिस असिस्टेंट ऑब्लिग है वो। अब ऐसा मत करिए भाई, गजट में चलिए आपका एडवर्टीजमेंट बताइए। माय लॉर्ड, कब तक खेल करते रहेंगे आप लोग? annexure P3, my lord. P3 यस। पेज 12 भृत्य वृत्त ऑफिस असिस्टेंट लिखा है, my lord. हाँ ये त्रुटि वक्त हो गया लॉर्ड से। नहीं तो आप त्रुटि सुधार के पे नया माय लॉर्ड मैंने किया, इसीलिए जो एनेक्जर P1 है लॉर्ड से मैंने उसको विज्ञापन इस्तिहार निकाल करके उस पद को निरस्त करके उसके बाद मैंने गाइडलाइन लिया उसका, तो जेडी द्वारा कहा गया कि बाकी पदों की आपके द्वारा नियुक्ति की जाए। और चूंकि अभी ये प्रोसेस में था, इसके बाद लॉर्ड सिर्फ कब से प्रोसेस में है ये फॉर्म लिए गए थे लॉर्ड से। आपसे जितना पूछना उतना बताइए। अगर आपने लिपि त्रुटि की थी तो उसको कब सुधार के आपने नया एडवर्टीजमेंट निकाला? उसमें नया मार्गदर्शन क्यों नहीं निकाला है आपने? उस पद के लिए जब नहीं आया लॉर्ड, मार्गदर्शन मांगे गए थे, लेकिन सिर्फ सफाई के मार्गदर्शन नहीं आया। लिपि को बुलवा लेते हैं, चलिए किससे मार्गदर्शन मांगा था? जेडी साहब से कि इसमें क्या कहाँ है जेडी पार्टी है इसमें? माय लॉर्ड रिस्पॉन्ड नंबर 3 Planet Council for respondent number 4 comments that there was typing error in the advertisement and therefore clarification was sought from the Joint Director, Urban Administration and Development, Riva Division, Riva. But since last 3 years, no clarification is issued by the JD. Therefore, fresh advertisement could not be issued. Full stop. The state has not bothered to file any reply to the petition. Let this specific plea be answered by the Joint Director within 7 days, failing which Joint Director, Urban Administration and Development, Riva shall remain personally present. List in the week commencing 17 April 2023. This is the matter regarding the impune recovery, which the benefit of one increment was granted to the petitioner on account of green card holder. May kindly see annexure P2. मर्ज हो जाता है, कब मिला था आपको ग्रीन कार्ड का बेनिफिट? ये बेनिफिट उन्होंने दिया है मेनोट may kindly see annexure P6 मेनोट dated 25/5/2010 page 21. Page 21. Yes मेनोट with effect from 1/4/2007 मेनोट। ठीक है, उसके बाद अगला वेतनमान कब लग गया? मेनोट 6वां मिला, फिर 7वां मिला। हाँ तो उसमें मर्ज हो गया ना। तो उसके लिए जो सर्कुलर उन्होंने इशू किए हैं लॉर्ड से वो कॉन्ट्राडिक्टरी है मेनोट। मैकेनिसी इन द P7 P8 मेनोट। P7 P8 बताइए। यस मेनोट, मैकेनिसी P7 पेज 22 मेनोट। हाँ पढ़िए। उपरोक्त विषय अंतर्गत ये जो लेटर इशू किया गया है, ये संदर्भ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की पत्र में दिनांक 1/5/19 ये जो पॉलिसी नहीं बन आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में शुरू किया गया। अरे भाई इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पुराना केस है। यस लॉ इसमें बहुत सेटल्ड है कि जब आपको एक वेतनमान में विशेष इंक्रीमेंट दिया जाता है
तो वो पार्ट ऑफ दी वो हो जाता है, पे पैकेज हो जाता है, एंड वो सब्सीक्वेंट जो रिवीजन होता है उसमें आपको उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। अलग से इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो इसमें अगर लिखा है। अलग से दे दिया गया है तो उसकी नहीं, रिकवरी अलग से नहीं दिया, वो इसी सर्कुलर से इनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, हो रहे हैं। सुनेंगे इनको जो है दो बार सेम इंक्रीमेंट दे दिया गया बेनिफिट एंड कहीं नहीं है रिकॉर्ड में डॉक्टर। अच्छा, ये तो इनका कंटेंशन है रिप्लाई में। इसमें हाँ रिकॉर्ड बताइए दो देने का, वेयर इज द रिकॉर्ड? ये R2 पढ़िए, पेज नंबर 8 पढ़िए, कब दिया आपने दो बार बेनिफिट? ये ये 1/10/2019 को क्या दिया आपने 1/10/2019 को? क्या बेनिफिट दिया, समझाइए तो थोड़ा सा। Respondents return is silent that how the benefit of family planning increment was given twice, necessitating recovery. and Let affidavit of R3 is the education officer. R3 is the indemnity bond, my lord. So indemnity bond is different. इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं। पहले आप ये तो समझाइए तो कि कैसे district education officer Panna be brought on record within 3 weeks, explaining as to when this benefit was given twice, demonstrating it through cogent documentary evidence, in which district education officer Panna shall remain personally present. List on 2 May 2023. Number 57 Sri Ashok Kumar Chaurasia. It is mentioned here. Petitioner challenging in except T1 work. क्या है P1? Representation of the petitioner rejected by the 22/2019 मैडम। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? पे स्केल का था हमारा मास्टर क्लर्क के लिए, केएल आश्रय के समान हमने मांग किया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। मास्टर क्लर्क के ऊपर केएल आश्रय लागू होता है? वो तो टाइम कीपर के लिए पर इसमें हमने अरे एक सेकंड बता तो दीजिए चौरसिया साहब, केएल आश्रय टाइम कीपर के लिए है, वो मास्टर क्लर्क के ऊपर लागू होगा इतना तो बता दीजिए। टाइम कीपर हम है ना। कहाँ है टाइम कीपर, बताइए कहाँ है आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर टाइम कीपर का? मास्टर क्लर्क को ब्रैकेट में आपने लिख दिया टाइम कीपर, वेयर इज योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर टाइम कीपर? P2 है मैडम। P2 Sri Ram Dayal Ahwal Singh working as the meet on master role as hereby promoted as कहाँ है टाइम कीपर, कहाँ लिखा है पढ़िए? master clerk। मास्टर फिर Master clerk is temporarily petitioner has filed his petition challenging order dated 22/8/2019 rejecting petitioner's representation to extend him benefit of the law laid down by this High Court in KL Athre versus the State of MP on the ground that said benefit was granted to the timekeeper. इसमें rejoinder RJ2 हमने जो फाइल किया पेज नंबर 11 में। Appointed as master clerk. Next para. When learned counsel for the petitioner, for whom this is second round of litigation, is asked to show from record that petitioner was ever appointed as timekeeper, so to take benefit of the post of, so to take benefit of the ratio of the judgment in KL Asre, is unable to demonstrate from record that petitioner was ever appointed as timekeeper. Cunningly and cleverly, petitioner has shown his post to be that of master clerk and within bracket timekeeper in the cost title. But he has not been able to bring any document on record to show rejoinder का that नंबर 11 पे जो है RJ2 फाइल किया हमने। क्या फाइल किया आपने? गवर्नमेंट का ही सर्कुलर है ये। सर्कुलर नहीं, आप मुझे अपना बताइए। आप इसमें टाइम कीपर मिस्ट्री मास्टर क्लर्क एक ही है हमारे ऑफिस। नहीं, ये सब नहीं, आपको इतना बताना पड़ेगा कि ये मास्टर क्लर्क जो है उसके ऊपर केएल आश्रय लागू था। आप मास्टर क्लर्क थे ये बता दीजिए। केएल आश्रय भी पहले मास्टर क्लर्क है। चल रहे होंगे, चलिए
So that petitioner was ever appointed as timekeeper, and therefore the ratio of the judgment of this court in case of KL Asre will not be applicable to the fact in front of the present case. There is no illegality in the impugned order calling for interference. Petition fails and is dismissed. Challenge. Service report is awaited, Lordship. Service report is awaited, Lordship. Why is service report? Notices were issued to the respondent, Lordship. Order dated 17/2/2023, Lordship. As for the office report, report is awaited. First off, notices were actually dispatched on 28/2/2023. 30 days time has lapsed. Clear office report be brought on record on or before next week. Lord, I have to continue. Here number 59, Atul Kumar Misra, Children today. My lord, petitioner has been retired from service on 30/4/2020. First, I will time a week time because Amit Singh has to argue in this case. He has gone to Arsenal because of some family, someone in his family. My lord, इसमें already सैकड़ों ऑर्डर हो चुके, कंप्लायंस भी हो चुके। इनका डिपार्टमेंट का एनएक्स P5 देख लें, स्वयं का ऑर्डर है। एनएक्स P5 पेज नंबर 16 डिपार्टमेंट, इसी पर कंप्लायंस भी हो चुकी। एनएक्स P6 सिमिलर ऑर्डर भी है, कंसेंट है। एनएक्स P6 देख लें। Petitioner's contention is that his case is on the same footing as and is covered by order dated 20/8/2018 passed by a coordinate bench in WP 16683/17 on the basis of order of the University dated 6/4/2018 enclosed herewith as Annexure P5. Petition same order for the page 18. This case is different. This is a recovery of the amount paid to him in excess in view of no leave, no without payment. This is ठीक है, चलिए इसको डिसाइड कर दीजिएगा। नाम बता दीजिए आपका। अतुल जैन। अतुल जैन। Here number 60. First, 5 weeks time only to file return. किस तारीख को रिटर्न फाइल हुआ था? Reply has been supplied to me on 31st of. देखिएगा, she prays for and is granted 2 weeks time to file the counter. List thereafter. Serial number 61. My lord had passed an order on 13th March, giving a query to the Dean of Medical College Riva under his own affidavit. That has not come. Affidavit is of a medical officer, and even that query has not been answered. It's an absolutely misleading affidavit. आपके डीन साहब आ जाएं, थोड़ा सा बुलवा लीजिए उनको। सब मेरा निवेदन तो देखना चाहता देख लें आप मेरिट्स पे क्या एफिडेविट आया है। इस डिप्लोमा की बात कर रहे थे। अरे छोड़िए उसको। जी सर। तो बताइए कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? हमने कहा लेट रिप्लाई बी फाइल अंडर द एफिडेविट ऑफ डीन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रीवा ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट। तो कहाँ है इनका एफिडेविट? Medical officer has OIC has filed it. No. It's an issue of misdescription of the diploma in the advertisement. That is why my lords put the question to the dean itself.
मतलब OIC है वो डीन का बताइए ना, कहाँ है डीन? ऐसी एक क्वालिफिकेशन लिख दी एडवर्टाइजमेंट में जो नॉन एग्जिस्टिंग है पूरे इंडिया में, वो डिप्लोमा ही नहीं है, यही बस इशू है पिटीशन। हाँ बता दीजिए, वो बता ही नहीं रहे। R1 is the one. R1 is the guideline. Guideline issued by the क्या लिखा है? भारत वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड एट कोट्टायम केरला। वहां से लाए हैं कुछ लिस्ट बना के। अरे वो भी मैच नहीं कर रहा। क्या एडवर्टीजमेंट में क्या था? Yes, just kindly see directly note page 60 एंट्री नंबर 3 कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन जो पोस्ट है। कार्डियो और क्या है? कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा। अब ये कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन कहाँ है? कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा कहाँ पर है बताइए? ये बता दें आप। हाँ, हमारा कहना पूरे इंडिया में कहीं नहीं, एक सेकंड बता तो दे। पेज नंबर 12 मैम। Page number 12 of your return. Yes, ma'am. Entry 830, my lord. Diploma in cardio. 830. Diploma in cardiovascular and किस पेज पर लिखा है? ये पेज नंबर 12 ही है सर इनके रिप्लाई का। उसमें एंट्री नंबर HEA 830। डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर ये अलग है। एंड थोरेसिक टेक्नोलॉजी, ये तो अलग चीज है। ये अलग चीज, इसको ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया? सेम है सर। सेम कैसे हो जाएगा वकील साहब? आपने लिखा क्या है? कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ये बता दीजिए, कार्डियोथोरेसिक ये तो अलग अलग हो गया। कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक टेक्नोलॉजी अलग हो गया। इसमें डीन को बुला लेता हूँ सर। कब बुलाएंगे? कल? परसों। There is non-compliance of the order dated 13/3/2023. Reply which has been filed by the OIC is cryptic. Along with the reply, some brochure of National Council of Vocational and Research Training is filed. Full stop. On page 12. HEA 830 Diploma in Cardiovascular and Thoracic Technology is shown. Full stop. It is not mentioned that it is being granted from which of the institutions in India and how it is similar to the required qualification prescribed in the advertisement on page 60 of the writ petition, which says that cardiothoracic technician diploma certificate. Full stop. Let this aspect be clarified and brought on record by the dean by filing his personal affidavit, failing which he shall remain personally present. List this case on 6 April 2023. 6th I am not there. Could it be 5th or 12th? Not? No, 12th. Sorry. 12 yes. And my lord, only one submission that the impugn order has been passed by one Dr. Saraswat, who was dean, per my lord's order. Just 3 days after he has left the post of dean and he has gone to his department of dermatology. ठीक है, क्या करें? वो डीन नहीं है तो ये बोल देंगे वो डीन ही नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है क्या कि सिद्धार्थ गुलाटी अगर केस को छोड़ देंगे तो केस की ब्लीडिंग बदल जाएगी क्या? ऐसा होता है क्या? कुर्सी पे कोई नहीं, आप इतनी कल्पना की उड़ाने क्यों भरते हैं? क्योंकि जैसा आया रिप्लाई वो इसीलिए वो ओआईसी को अपॉइंट करके ही वेंट अवे फ्रॉम दी। हाँ ठीक है। तो इंटायर एडवर्टाइजमेंट कोर्ट में अगर कमजोर मत समझिए कोर्ट को। 12 number 62. It's a case for this petitioner as an employee of the corporation. Major penalty of withholding of 2 increments has been effected by giving him a show cause notice. And that too, our show cause notice is issued on that date, and on the same day, the penalty is imposed. So, even otherwise, my lord, the major penalty because withholding. My lord, seek. I have to file reply. My lord, seek a week's time. फाइल करके आप My lord, the matter. मेजर पेनल्टी शो कॉज नोटिस पे इन्फ्लिक्ट की जा सकती है, इतना सा तो इशू है
The matter is of 2011. The order under challenge is 2011. I'll have to go to look into the records, my lord. 22 में कैसे याद आई आपको? 11 साल बाद ये रिटायरमेंट पे जो सेटलमेंट सर, बिकॉज दिस सैलरी, दिस क्यूमुलेटिव इफेक्ट। चलिए इनको टाइम देने, मतलब इवन पहले दिया था टाइम, ये और टाइम देंगे। अभी तो 2011 से जब आप 11 साल बाद रिपीटिशन लगा सकते हैं, तो इनको भी तो एक 8-10 साल का टाइम लगेगा जवाब देने में। a week's time already. 4 weeks टाइम। वैसे इतना सा ही इशू है सर, ये सुधार तो हो नहीं सकता। Akshat Ajaria. Granted 4 weeks time. Akshat Ajaria, taking objection that this petition is highly belated. Order of punishment is dated 14/7/2011. It is challenged in the year 22. Thus keeping the issue of limitation open. 4 weeks time is granted to file reply list after 4 weeks. Okay. Here number 63. My lord, according to the मुड़ गया। हाँ ठीक से को करने बताओ, खोल के फोटोकॉपी लगा दीजिए। क्या हो गया है? अरे लाइए दीजिए। ये फाइल की, ये तो अभी की फाइल है। ये बता रहे, ये लगा हुआ है, ये है, फ्लैग लगा दीजिए। यहाँ से लास्ट तक करा दीजिए फोटोकॉपी, यहाँ तक बता। ये यहाँ तक, यहाँ फ्लैग लगा दीजिए। Serial number 63. recorder. लिखिए श्री कार्तिक जग्गी, learned counsel for the appellant. Shri Harshvardhan Singh Rajput, learned counsel for the Union of India. Let record of the tribunal be called for. List this case for hearing along with the record of the tribunal. Highly obliged. Serial number 64. In Amit Dubey. I am praying 6 week time for reply, my lord. Notices has been issued, man. None for the petitioner. Shri Naitna raised for and is granted 6 weeks time to file the reply list after 6 weeks. Serial number 65. Shri Amit Misra. Lordship, in this matter, I am appearing on an advance notice. Therefore, I am praying for 4 weeks time to file my wakalatnama as well as reply to. Last time the notices were issued, so they can say they are appearing on advance notice. Notice was. But my only grievance, otherwise I would not have observed that she must be paid at least something, minimum pension, because there is no provision in the law that a dead person के against कोई भी आप inquiry कर सकते हैं। पूछेंगे इनसे। देखिएगा श्री हेमंत श्रीवास्तव, learned senior advocate, assisted by Shri Dhananjay Mishra. Shri Takmil Nasir raised for and by way of last indulgence granted 4 weeks time to show that how inquiry could have been conducted against a dead person and why provisional pension is not being paid to the widow petitioner. Let reply be filed within 4 weeks. List this case in the week commencing 1 May 2023. Highly obliged, Lordship. Serial number 66. Shri Purushottam Das Jaiswal. I am praying 2 weeks time for in reply. My lord, ये छोटा सा इशू है my lord. इसमें हमारा टिपिकल एरर होना था। प्रसव पहला था, उसकी जगह हमसे 2 लिखा गया था। हम एएनएम के पद पे थे माय लॉर्ड, उसके कारण इन्होंने हमारी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया। सुनेंगे ना? और माय लॉर्ड पुरुषोत्तम दास जायसवाल। यस माय लॉर्ड, लास्ट टाइम पे इनको वो किया गया था माय लॉर्ड, राहुल त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उसमें 2 weeks. Further praise for 2 weeks time to file reply. List in the week commencing 24 April 2023. हो जाएगा। माय लॉर्ड, आई एम प्रेइंग फॉर इम्प्यून्ड ऑर्डर में स्टे कर देंगे। टर्मिनेशन स्टे नहीं होता है भाई। If you succeed, you will get all the benefits. माय लॉर्ड, इसमें 3 लोगों को लिए वो चलिए करिए, सुनिए। Serial number 67. I am praying 2 weeks, my lord, for this.
Anil Lalla for the petitioner in place for 2 weeks time to file reply list after 2 weeks. Interim order में काट लिया. Interim order if any to continue. So let's. Serial number 16, Amit Khatri, I'm praying weeks time for compliance of last order. The reply plus. Sri Amit Khatri, he prays for weeks time to make compliance of the earlier order. Interim release. IR to continue. serial number 69, Srimati Sudha Gautam. Reply is awaited, Lordship. I'm praying 4 weeks, ma'am. Weeks time कर दीजिएगा. मैडम का नाम डाल दो. Your Lordship, may kindly be linked matter with 6188 of 23. उसमें क्या है? उसमें भी relieving order को ही challenge किया है, which इसी petitioner. Yes, Lordship. इसी petitioner. No, Lordship, that is different matter. आपके कोई लिंकिंग की जरूरत नहीं. IR है क्या इसमें? Yes, Lord. IR if any to continue. Serial number 70, Devesh Badme. I'm praying my lord 2 weeks time for service. In 2 weeks. IR में कहीं IR to continue. Serial number 71, Vijay Kumar Padya. I'm praying 2 weeks for reply, my lord. The praise for and is granted in the Saurabh Soni, Manas Manivar. IR to be continued. 2 weeks time to file reply just after 2 weeks. IR to continue. Really. Serial number 72, Sushil Kumar Mishra. परेशान हो गए थे नंबर आ गए. I'm sorry, Lordship. नहीं बताइए हाँ. क्या मैटर है? Lordship, petitioner is the district manager microfinance MP rural livelihood mission जिला पंचायत जबलपुर Lordship. She is working since 2005. May kindly Lordship another page number 5. Page number 30 so called notice. Page number 30. Second so called notice. First so called notice Lordship manager P order कहाँ है? P13 कहाँ है? Lordship page number 39. Page number 38 Lordship. आदेश 28/12/2022 का आदेश है Lordship. ठीक है फिर जवाब मंगाते हैं. Notice to the respondent. Then Lordship we PF for registered AD post. मैं हम लोग रुकल Lordship. हाँ we filed the appeal before the commissioner Lordship. आप देख लिया P13 कमिश्नर का ऑर्डर. कमिश्नर उसको पहले Lordship कलेक्टर का ऑर्डर 28/12 का ऑर्डर कलेक्टर का जो इम्प्यून ऑर्डर है. इसमें इसके पहले जो सो कॉल्ड नोटिस दिया था सेक्शन 89 का. सेक्शन 89 में Lordship हम कवर नहीं होते. जवाब ही तो बुलाएंगे Lordship but interim order नहीं हो पाएगा. इंटर नहीं हो पाएगा. because the Lordship the petition